Party USA National Convention. See, within 6 months of this party's inception, here we are going to gather more than 200 volunteers, and many are from, thank you, and we are from over 20 cities of USA. So, I'm very sure that it will send a strong message to the rest of the world that the fight picked up by Aam Aadmi Party of bringing better governance, better transparency, accountability and more participation of common man is the only solution for a better India. Today, we'll not only brainstorm among the volunteers on strengthening our base, our support to Aam Aadmi, but we also have an opportunity to listen to the greatest leaders of our time. More importantly, the selfless leaders of our time. And I am sure it will mark a new beginning in all of our lives. So without taking much of your time, let me invite my first guest. He is mainly credited with reviving Hindi poetry among young generation. He is an artist, a fighter, a motivator. When he comes on stage, he makes you sing, he makes you laugh and awakens that string of patriotism in you. So let's welcome him with a loud round of applause, Mr. Kumar Vishwas. भारत माता की बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगेंद्र भाई और बहुत सारे चेहरे जिन्हें मैं पहचानता हूँ। कुछ हमारे फेसबुक के महारथी हैं, कुछ ट्विटर के महारथी हैं। अहमदाबाद, गांधीनगर और हैदराबाद में जो पेड नेट वीर बैठे हैं, उनसे मुकाबला करते हुए बहुत सारे लोग हैं जो लगातार ट्वीट करते हैं। मेरे पास समय बहुत थोड़ा है क्योंकि मैं भाग दौड़ में आया हूँ। आप लोगों का सौभाग्य है और मेरा व्यक्तिगत सौभाग्य भी है कि योगेंद्र भाई यहाँ हैं, वो देर तक आपके साथ रहेंगे, आपसे बात करेंगे। शुरुआती दौर में जब हिंदुस्तान में चुनावों के बारे में चर्चा होती थी, तब उस दूरदर्शन के डिब्बे में जो 2-4 लोग बहुत बेबाक बोलते थे, उनमें एक योगेंद्र भाई रहे हैं और मैं उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा फैन रहा हूँ अपने बचपन का, अपने राजनीतिक कैरियर के। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ काम करता हूँ। पिछले 15 दिन से मैं अमेरिका में हूँ। हर साल अमेरिका आता हूँ। पहले ज्यादा वक्त के लिए आता था, 40-45 दिन की शो सीरीज होती थी। अब की बार मुझे मेरे नेताओं ने केवल 20 दिन की स्वीकृति दी है। योगेंद्र भाई जो कि सीनियर लीडर है, इनको ज्यादा की मिल गई है। मुझे अरविंद ने कहा कि जाना ही नहीं है और अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो चलिए 15-20 दिन के लिए जा सकते हैं। आप लोगों में एक उत्साह है, भारत में भी एक उत्साह है। जो हिंदुस्तानी यहाँ पर हैं उनमें धीमे धीमे ये बात घर कर रही है कि 2 साल पहले जब हम हिंदुस्तान जाते थे तो उतरने के बाद कस्टम से लेकर और बाहर सड़क तक हम ये मानते थे कि भ्रष्टाचार भारत का सामान्य शिष्टाचार बन चुका है। हम ये मानते थे कि इस देश में ऐसा ही कुछ होगा, इस देश को ऐसा ही रहना है। और यहाँ आने के बाद, इस कंपैरिजन के बाद, ये बड़ी सड़कें, ये व्यवस्थित सब कुछ, बिना रिश्वत के चलता हुआ काम, उसके बाद आप उम्मीद छोड़ बैठे थे। आप ये मान के चलते थे कि इस देश में कुछ हो नहीं सकता। ये जो अभी एक शोरी यहाँ दिखाई गई थी, ये जो कुछ चेहरे वहां दिखाई दे रहे हैं, ये जो कुछ तिरंगे वहां दिखाई दे रहे हैं, ये जो एक बाहर कमीज निकाले हुए, एक घिसी हुई पैंट पहने हुए एक 5.5 फीट का एक आदमी सड़क पर निकलता है, उसके पीछे लाखों लोग निकलते हैं, लाखों लोग उसमें उम्मीद जताते हैं, उसके साथियों में उम्मीद जताते हैं। इसने किया क्या है? इसने ये किया है कि जब आप घर में बैठकर 2 साल पहले ये बात करते थे यूएस में बैठकर, इंडिया कुछ नहीं हो सकता, आजकल जब आपको पता चलता है कि एक रेल मंत्री ने इस्तीफा देना पड़ा, एक कानून मंत्री को एक बहुत धीमे बोलने वाले वकील के कारण अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, प्रशांत भूषण के कारण, तो आप घर बैठकर कहते हैं यस कुछ हो सकता है, अब कुछ बदल सकता है, अब एक चेंज आ सकता है। तो ये जो उम्मीद जागी है, हमारा एक कवि था अवतार सिंह पाश, पंजाब का कवि था। आतंकवाद के दौरान उसको गोली मार दी थी भिंडरांवाले टाइगर्स फोर्स ने। उसने एक कविता लिखी थी, उसने लिखा था कि कुछ भी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होता, नहीं होता दुर्भाग्यपूर्ण आपके शहर में पानी का भर जाना, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण होता है आदमी के सपनों का मर जाना। इस आंदोलन ने हिंदुस्तानी का सपने को जिंदा किया है। इस आंदोलन ने हर हिंदुस्तानी के मन में इस बात को जिंदा किया है कि हम होंगे कामयाब। एक दिन आएगा कि हमारा देश भी दुनिया के हर बड़े मुल्क की तरह उतनी ही बड़ी सड़कें, उतनी ही आजादी के साथ जीते हुए लोग
एक दूसरे को सम्मान देते हुए लोग, ऐसा देश बन सकेगा। क्या नहीं है हमारे पास, कौन सी चीज हमारे पास नहीं है, आप उससे बेहतर जानते हैं। लेकिन जो लोग ये सोचते हो, मैं अक्सर यहाँ के लोगों से बात करता हूँ जो यहाँ रहते हैं, मैं इस महफिल में भी बहुत सारे दोस्तों को देख रहा हूँ, वो अक्सर कहते हैं कि अमेरिका एक 200 साल पुरानी डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान एक 60 साल पुरानी डेमोक्रेसी है, इसको मैच्योर होने में वक्त लगेगा। लेकिन जो दूसरे जिन्होंने चीजें पढ़ी हैं वो लोग जानते होंगे। हमारे यहाँ राजा था दुष्यंत, आप सबने पढ़ी होगी उसकी कहानी। वो जंगल में गया था, राजा था, एक ऋषि की बेटी के साथ उसने विवाह किया, शादी की, उसके बाद लौट आया अपने महल में, वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। उसको लेकर कुछ महिलाएं आधी रात दुष्यंत के घर गई, महल पर गई। मैं विज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहा था, उसमें रात को 3 बजे शकुंतला को लेकर, जो 4 महीने की प्रेग्नेंट है, उसको लेकर राजा के महल में कुछ औरतें पहुंचती हैं और वो राजा के महल के दरवाजे पर खड़े हुए आदमी से पूछती हैं, प्रतिहारी से, कि ये राजा दुष्यंत का महल है, ये कहानी है, ये किस्सा है। हमारी फिल्में, हमारी कहानियां किस्सा क्या है? समाज का प्रतिबिंब है, जो समाज में हो रहा होता है वही हो रहा होता है। इसका मतलब कहानी लिखी गई थी तो ऐसा हो रहा होगा। प्रतिहारी कहता है, बाहर खड़ा हुआ द्वारपाल कहता है, वॉचमैन कहता है, जी हाँ ये राजा का महल है। तो रात को 3 बजे वो महिला पूछती है, मैं राजा से मिल सकती हूं? मैंने एक संस्कृत का शब्द पढ़ा, मैं अंदर से थ्रिल हो गया। वो लिखा हुआ था, अविश्वमोजम लोकतंत्र से सर्वाधिकारा, दिस इज योर कंटिन्यूअस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू मीट योर एम्परर एट एनी टाइम। आप अपने राजा से कभी भी मिल सकते हैं। ये गणतंत्र की परिभाषा हिंदुस्तान में थी, ये गणतंत्र हमने सिखाया था। क्या आज आप हिंदुस्तान के किसी विधायक से, किसी नेता से उसके गुंडों के बिना मिल सकते हैं? ये हमने बदल दिया। पार्लियामेंट एक ऐसा शब्द हो गया जो खराब लोगों की जमात है, लेकिन पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट नहीं है। हमारी पॉलिटिक्स ने पूरी कोशिश की 2 साल में कि हर पढ़े लिखे आदमी को यह सूचना दे कि पार्लियामेंटेरियंस ही पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट वो था जिसमें 5.5 फीट का वो रेल मंत्री बैठता था, जिसने एक रेल दुर्घटना पर इस्तीफा दे दिया था, जिसका नाम लाल बहादुर शास्त्री था। पार्लियामेंट वो था जहां श्रीमती इंदिरा गांधी बैठती थी, जिन्होंने देश की इज्जत का सवाल आया तो एक देश का भूगोल और इतिहास दोनों बदल दिया एक निर्णय में। पार्लियामेंट वो होता है जहां सरकार बचाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी स्पीच देते हैं और कहते हैं कि अगर वोट खरीद के सरकार बचनी हो तो ऐसी सरकार में चीमटे से छूने से मना करता हूं। लेकिन पार्लियामेंट वो नहीं होता जो कलमाडी, राजा और कनीमोजी जैसे लोगों को शेल्टर देता है। ये धारणा पार्लियामेंट की बदलनी पड़ेगी। यह आंदोलन 2 साल से चल रहा है, 2.5 साल से चल रहा है। इससे पहले मैं आपकी तरह था, मैं सिर्फ टीवी देखता था, अखबार पढ़ता था, संपादकीय पढ़ता था और उसके बाद तबसरा करता था, डिस्कशन करता था। जो डिनर से पहले सलाद उतरते हुए डिस्कशन होते हैं, दिस अंदाजा, ओ ग्रेट मैन, ही विल डू समथिंग वन फाइन डे, अरविंद केजरीवाल लुक्स गुड, कुछ करेगा, ऐसे डिस्कशन करता था। लेकिन मेरे पुराने दोस्त थे दोनों ये लोग, मनीष बचपन से साथ पढ़ा था, अरविंद भी पुराना दोस्त था। मैं इस लड़ाई में धीमे से गया और मुझे अपना स्वार्थ समझ में आने लगा, मुझे अपना मोटिव समझ में आने लगा। और मेरा छोटा सा स्वार्थ है, बस मेरा एक छोटा सा स्वार्थ ये है कि आज से 25 साल बाद मेरी लड़की का लड़का मुझसे कहे, मेरा पोता मुझसे कहे कि नाना जिस समय हिंदुस्तान सचमुच आजाद होने की प्रक्रिया में था, दूसरी बार 47 के बाद, आप कहां थे? तो मैं उससे कह सकूं कि मैं उन्हीं लोगों के साथ खड़ा हुआ था जो इस कोशिश को आगे ले जा रहे थे। मैं अपना घर, अपना काम छोड़कर उनके साथ खड़ा हुआ। और ये सबके साथ होता है। चाणक्य हमारे एक बहुत बड़े टीचर थे, उन्होंने तक्षशिला से ग्रेजुएशन किया था। वो मतलब तक्षशिला से ग्रेजुएशन करना उस समय स्टैनफोर्ड फेलो की तरह माना जाता था, बड़ी जगह से पढ़ के आए। लेकिन जब वो आए तो देखा कि सिकंदर का आक्रमण हो रहा है। उन्होंने सभी राजाओं से बात की और कहा कि भैया आप इस आक्रमण को रोको, जैसे हमने सब राजाओं से बात की। अन्ना, अरविंद, हम लोग सबके पास गए, लालू जी के पास भी गए, मुलायम सिंह के पास भी गए, मायावती के पास भी गए, सबके पास गए, सबसे कहा कि लोकपाल पास कराओ। ऐसे ही चाणक्य भी सबके पास गए, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और लोग अपने आमोद प्रमोद में, अपने रास रंग में व्यस्त रहे। उसके बाद चाणक्य ने कहा कि अब किसी से बात नहीं करूंगा, अब मैं सड़क के किनारे खड़े हुए किसी भी नौजवान को चंद्रगुप्त बनाऊंगा और उसे हिंदुस्तान का बागडोर सौंपूंगा और नया भारत बनाऊंगा। यह आंदोलन भी ऐसा ही है। सामाजिक कार्यकर्ता सबसे पहले बदलाव की लहर लेकर गए, पूरा देश जगा। आप सबने भी यहाँ जागृति फैलाई। अन्ना जब 12 दिन के लिए बैठे हुए थे, मुझे ऐसा नहीं लगता कोई भी हिंदुस्तानी ऐसा नहीं था जो पूरी दुनिया में हो जो अंदर से जिसे महसूस ना हुआ हो कि हमारे लिए एक लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन उसका परिणाम क्या निकला, उसके हासिल क्या हुआ? हमसे अक्सर लोग ये पूछते हैं इससे हासिल क्या हुआ। हासिल ये हुआ
कि हमारे पॉलिटिशियंस ने सोचा, हमारी पॉलिटिकल क्लास ने सोचा कि ये जनता भूल जाएगी। सबसे पहले तो उन्होंने मैसेज को शूट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा लोकपाल से कौन काम खत्म हो जाएगा, लोकपाल से क्या भ्रष्टाचार मिट जाएगा, लेकिन मैसेज खत्म नहीं हुआ, लोग इकट्ठे हुए। फिर उन्होंने मैसेंजर को शूट करने की कोशिश की। आप सबको याद है जो हिंदुस्तान के समय इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं मनीष तिवारी जी, उनका वो बयान आप सबको याद है जिसमें उन्होंने कहा कि किशन बाबूराव हजारे तुम तो ऊपर से नीचे तक कीचड़ में सने हुए हो। लोगों को बहुत गुस्सा आया, उनको लगा अन्ना पर नहीं बोलना है। सोनिया गांधी ने इंस्ट्रक्शंस दिए अन्ना के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, थोड़ा समय बिताने दो, टाइम बीत जाए। उसके बाद उन्होंने बाकी मैसेंजर्स को शूट करने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल ने 9 लाख रुपए नहीं दिए, कुमार विश्वास कॉलेज नहीं जाता, किरण बेदी ने पैसे बचा लिए बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास जो कुछ भी था। मैं तो ये मानता हूं कि ऐसा कर लिया होगा, मैं भी कॉलेज नहीं गया हूं, अरविंद ने 9 लाख रुपए भी ले लिए होंगे, लेकिन इससे क्या लोकपाल आ गया, इससे क्या कानून बन गया, इससे क्या भ्रष्टाचार रुक गया? सवाल कुछ और है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल पढ़ने के बाद जब हम अपने लीडर्स के पास जाते हैं तो हम कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग आए आपसे बात करने के लिए। उनका एरोगेंस कहता है हु द पीपल ऑफ इंडिया, तुम लोग कौन हो, तुमसे क्यों बात की जाए? तो ये 2 साल बहस चली चैनल। आप सबने भी यहाँ चैनल देखे। जब भी हम कभी जाते थे सदा वो हमसे कहते थे देखो भाई कानून तो संसद में बनेगा, आपके कहने से तो बनेगा नहीं, सड़क पे भूखे रहने से तो बनेगा नहीं, और ज्यादा तकलीफ है तो आओ कानून बना लो। अब तकलीफ में उबे हुए हिंदुस्तानियों ने कहा कि चलो अब हम संसद में आते हैं तो कानून बनाते हैं। तो आप कहते हैं कि आप तो पॉलिटिक्स करते हो, आप तो राजनीति करते हो, लेकिन इस नई राजनीति को मैं सलाम करता हूं। एक 200 रुपए डेली के वेजेस पाने वाले एक मजदूर की बेटी 6 साल की गायब हो गई। दिल्ली की पुलिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी और कहा खुद ढूंढ लो। वो 3 दिन बाद मिली इतनी बुरी हालत में, तो वहां के एसएचओ ने 2000 रुपए देकर कहा कि बात को मिट्टी डालो, लेकिन नहीं, मिट्टी नहीं डाली। 4-6 लड़कियां, कुछ लड़के तिरंगा लेकर मनीष पहुंच गए वहां। 50 से 100 हुए, 100 से 500 हुए, 500 से 5000 हुए। और अगले दिन रात को मैंने देखा टीवी चैनल्स पर न्यूज थी 11:52 पर देश की सबसे शक्तिशाली महिला सोनिया गांधी ने देश के गृह मंत्री को अपने घर बुलाया, मुख्यमंत्री को बुलाया और कहा कि कुछ करो, लोग गुस्से में आ गए हैं। ये जो हिम्मत पैदा की है ये इस आंदोलन ने पैदा की है, ये आप लोगों ने पैदा की। और ऐसे पल मुश्किल में आते हैं। हम और आप सौभाग्यशाली हैं कि हम बदलते हुए हिंदुस्तान के इतिहास एक बड़े मोड़ पर एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है आदमी के जाते समय महसूस करना। 83 साल की या 80 साल की हमारे प्रधानमंत्री जैसे बिना निर्णय लेने वाले व्यक्ति से 23 साल की भगत सिंह की जिंदगी बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसने समय पर निर्णय लिया। तो ये निर्णय लेने का क्षण है, ये जानने का समय है। मैं तो देव की घर से आया हूं, आप लोग यशोदा के घर बैठे हुए हैं। यहाँ बड़ा सुकून है, यहाँ बहुत आसान है मामला। मुझे भी पहले बहुत सुकून आता था। मैं जब भी कभी यूएस शो करने के लिए आता था तो मैं इसे अपना वैकेशन पीरियड मानता था। मैं मानता था बड़ा आराम होगा, बड़ी चीजें होंगी, लेकिन अब एक बेचैनी लगती है। अब अंदर से एक ऊब जागृत होती है और लगता है कि सब कुछ होने के बाद मेरे मुल्क के पास क्यों नहीं, मेरे मुल्क के पास ये चीजें क्यों नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति के व्यक्तिगत डॉक्टर्स की टीम में 1 दर्जन हिंदुस्तान के बेटे बेटियां हैं। कितने बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे लड़के लड़कियों की प्रतिभा पर यहाँ का राष्ट्रपति विश्वास करता है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी विश्वास करता है। और हमारे देश की सबसे बड़ी नेता है, उनको जरा सी बीमारी होती है तो विदेश चली जाती है। आप हमारे बेटे पर भरोसा नहीं करती और मैं आपके बेटे पर भरोसा करके उसे देश सौंप दूं, उसे हिंदुस्तान चलाना है। ये वो सवाल हैं जो आपको उठाने पड़ेंगे, ये वो सवाल हैं जो आपको आगे ले जाने पड़ेंगे। तो ये जो आज अमेरिका के राष्ट्रीय अधिवेशन जो आप कर रहे हैं, नेशनल कन्वेंशन आप कर रहे हैं, हमारे पास एक बड़ी चुनौती नवंबर में आ रही है। अभी आप देख रहे होंगे कि इंटरनेट पर पिछले 6 महीनों से हमें हिंदू और मुसलमान बनाया जा रहा है। अचानक ओवैसी साहब प्रकट हो गए हैं, अचानक राम सेतु बनने लगा है। वही राम सेतु जो हमारे एनडीए के दोस्तों के समय में जिसको तोड़ने का निर्णय लिया गया था। वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे हमारे आदरणीय अडवाणी जी, उन्हीं के समय में निर्णय लिया गया था कि राम सेतु तोड़ दिया जाए। अचानक राम सेतु का प्रसंग आ गया है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि अगर हम हिंदू और मुसलमान बने रहे तो इनके फायदे में हो जाएंगे, ये जीत जाएंगे, कोई एक जीत जाएगा, कोई एक हार जाएगा। लेकिन अगर हम भारतीय बन गए तो हम जीत जाएंगे और ये सारे हार जाएंगे।
ये इसी बात से डरते हैं। इनकी समस्या यह है कि किसी तरह हम हिंदुस्तानी ना बन जाएं, हम एक होना ना सीख जाएं। आप यहां पर हैं, आपकी वॉइस बहुत मैटर करती है। आप सब जब एक ट्वीट करते हैं तो बहुत मैटर करता है। आप एक फेसबुक पोस्ट लिखते हैं तो बहुत मैटर करता है। जब उसमें नीचे पता लिखा हुआ होता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स का, तो बहुत मैटर करता है। ये पहली राजनीतिक पार्टी है जो कॉर्पोरेट से पैसा नहीं ले रही, इसलिए हम पैसे के संकट में भी हैं। ये पहली राजनीतिक पार्टी है जो वंशवादी नहीं है, जो कह रही है कि एक घर का एक आदमी रहेगा। लालू यादव जी का संघर्ष शुरू हुआ था श्रीमती इंदिरा गांधी के वंशवाद के खिलाफ। वो इस बात के खिलाफ थे कि संजय गांधी क्यों प्रमोट किए जा रहे हैं। कल परसों उन्होंने अपने दोनों बच्चे लॉन्च किए पॉलिटिक्स में, दोनों को हाथ दिलवाया कि मेरे बच्चे हैं। इसलिए इस बार आपको चेहरे नहीं बदलने। मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूं कि राहुल गांधी बहुत खराब आदमी है, नरेंद्र मोदी बहुत अहंकारी आदमी है और अरविंद केजरीवाल और योगी यादव बहुत संत आदमी है। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये जीत जाएंगे तो ये भी बिगड़ सकते हैं, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए इस बार लोगों पर भरोसा नहीं करना, इस बार खुद पर, व्यवस्था पर भरोसा करना है कि व्यवस्था बदलनी है, व्यक्ति नहीं बदलने, ये कानून बदलने हैं, ये ऐसी चीजें बदलनी है। अभी भारत की राजनीति में होता यह है कि आदमी अरविंद केजरीवाल बन के जाता है, लालू यादव बन के निकलता है। हम एक ऐसा स्वराज चाहते हैं कि आदमी लालू यादव बनकर घुसे और वो अरविंद केजरीवाल बनकर। हम एक ऐसा स्वराज चाहते हैं, एक ऐसा सपना चाहते हैं जहां कानून सबके लिए हो। टू सेट ऑफ लॉ जब तक चलेगा तब तक हिंदुस्तान वहां नहीं पहुंच सकता जहां पहुंचना चाहिए। सुनील दत्त के बेटे जो इतने बड़े व्यक्ति थे, हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े प्रतीक थे, उनके बेटे 36 साल की उम्र में मशीन गन रखते हैं, AK-47 रखते हैं, AK-57 रखते हैं, और हमारी रूलिंग पार्टी के महासचिव कहते हैं कि वो नासमझ थे। अगर 36 साल के संजय दत्त नासमझ थे तो 42 साल के राहुल गांधी तो अभी 6 साल के ही हुए हैं। उनको तो प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं बनाया जाना चाहिए। ये टू सेट ऑफ लॉ है। ये तो दो तरह का कानून है, दो तरह की व्यवस्था है। हमने केवल यही तो पूछा था कि रॉबर्ट वाड्रा साहब, आपके पास ये पैसा जो आया कैसे आया, इसका हिसाब बता दीजिए। उन्होंने कहा कि मैंने कॉर्पोरेशन बैंक से कर्जा लिया था 7.5 करोड़ का। कॉर्पोरेशन बैंक ने कहा कि हमने दिया ही नहीं। हम पूछ रहे हैं कैसे आया, बोले आप लोग बदतमीज हैं, आप लोकतंत्र पर प्रहार कर रहे हैं। ये क्या समस्या है? आप जितने लोग बैठे हैं, अगर आपके बेटे के स्कूल बैग में कल $10,000 निकल आए तो आप क्या करेंगे? आप उसे पूछेंगे, वो नहीं बताएगा तो आप उसे डांटेंगे, फिर भी नहीं बताएगा तो 911 की चिंता ना करते हुए भी आप उसे झापड़ मारेंगे। आप पूछेंगे उससे कि पैसे कहां से आए, चूंकि आपका बेटा है। आप जानना चाहेंगे किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा। मेरे देश का एक नागरिक जो प्रिविलेज नागरिक है, जो किसी भी एयरपोर्ट पर बिना चेकिंग के निकल जाता है, मैं उससे पूछ रहा हूं कि आपके पास पैसा कहां से आया, और आप कह रहे हैं कि आप लोकतंत्र के खिलाफ है। हम बिल्कुल राजनीति करना नहीं चाहते, राजनीति हमारा काम भी नहीं है। लेकिन हमें दुख होता है कि जब हम न्यूयॉर्क में मेट्रो में बैठ के जाते हैं योगेश भाई, तो पड़ोस में बैठा हुआ अमेरिकी मुझसे पूछता है फ्रॉम विच कंट्री यू आर। मैं कहता हूं आई एम फ्रॉम इंडिया। वो कहता है इंडियंस, वेरी गुड इंजीनियर्स, वेरी गुड डॉक्टर्स, वेरी गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मैं सपना देखता हूं कि 7 साल बाद मैं शिकागो में शो करने के लिए आऊं और मुझसे किसी स्टारबक्स के बाहर खड़ा हुआ एक अमेरिकी पूछे फ्रॉम विच कंट्री यू आर। मैं कहूं आई एम फ्रॉम इंडिया। वो कहे इंडियंस, वेरी गुड पॉलिटिकल लीडर्स, वेरी क्लीन पॉलिटिक्स, वेरी गुड गवर्नेंस। जब कभी इस बात को मैं अमेरिकियों की महफिल में कहता हूं तो वो लोग हंसने लगते हैं। उनको ये देवा स्वप्न लगता है, उनको लगता है ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन 57 में अगर 82 साल के बहादुर शाह जफर ने ये सोचा होता कि भारत आजाद नहीं हो सकता, अपने 4 बेटे क्यों कटवाऊं, तो आज हम आजाद हिंदुस्तान के बाशिंदे ना होते, हम सब भी गुलाम रहे होते। उस आदमी ने 82 साल की उम्र में सोचा कोई बात नहीं, 4 लड़के जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आजादी की लड़ाई तो लड़ते हैं। 57 में शुरू की, 90 साल में पूरी हुई। मुझे पता नहीं कि आजादी की दूसरी लड़ाई कब पूरी होगी, दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। आप सबको आना है, आप सबको पहुंचना है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि हम जब इस दुनिया से जाएंगे तब हम सुकून से जाएंगे कि हमने स्वीकार नहीं किया, हम लड़े। क्योंकि युद्ध में उतरते समय इस बात से तय नहीं होती आपका नाम इतिहास में कि आप जीते या हारे। इतिहास में नाम आपका इसलिए लिखा जाता है कि आपने गोली सीने पर खाई कि पीठ पर खाई। तो ये लड़ाई जिस आत्मबल से लड़ी जा रही है, जिस शुचिता से लड़ी जा रही है, जिस पवित्रता से लड़ी जा रही है। बहुत सारे नाम इस सदन में बैठे लोगों के दिमाग में गूंजते होंगे, मेरे दिमाग में भी बहुत सारे नाम गूंजते थे इससे पहले।
अभी हमारे यहाँ दिल्ली में लोग कहते हैं, बाहर भी मुझे कुछ एक सज्जन मिले, उन्होंने मुझसे कहा, कुमार भाई हम दिल्ली में वोट तो नहीं काटेंगे भाजपा के, यहाँ भी भाजपा के बड़े शुभचिंतक कुछ मित्र हैं, हो सकते हैं नरेंद्र मोदी के शुभचिंतक कुछ मित्र होंगे। मैंने कहा दिल्ली में हम भाजपा के वोट काटेंगे ही नहीं, आम आदमी पार्टी भाजपा के खिलाफ वहां होगी नहीं, क्योंकि पिछले 15 साल से भाजपा वहां आ रही है, हार रही है, कांग्रेस जीत रही है। भारत में तो स्कूलों में नियम है कि अगर आप 3 बार फेल हो जाए तो आपका स्कूल से नाम कट जाता है। दिल्ली के स्कूल से नाम कट गया है, हमने दिल्ली के पॉलिटिकल स्कूल से नाम काटा, क्योंकि ये दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों आपस में जानकार हैं। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि 2014 का जो इलेक्शन है, ये दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी शायद, और इनका चुनाव चिन्ह होगा हाथ में कमल का फूल। ये हो सकता है, क्योंकि दोनों के आचार विचार में, वेदांता पैसा भेजता है गुजरात इलेक्शन के लिए, तो नरेंद्र भाई को भी उतना ही पैसा देता है जितना कांग्रेस को देता है। ये कैसे चल रहा है? एक ही पार्टी के 2 पॉलिटिकल मोटिव कैसे हैं? एक संस्थान के 2 सिद्धांत कैसे हैं? वो दोनों में से एक को दे सकता है, दोनों में से एक को बात कर सकता है। दोस्तों, हम तो यूं ही रहने हैं अगर हम इन्हीं में बटे रहे। हम पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं होना चाहते थे, और मैं आज इस कन्वेंशन के मौके पर एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य होने के नाते और अपनी जो पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी है उसका सदस्य होने के नाते अपने वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव जी के सामने एक घोषणा करता हूं कि अगर लोकसभा के चुनाव से पहले देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने संयुक्त सदन बुलाकर राष्ट्रपति महोदय को बिठाकर 4 कानून पास कर दिए, जन लोकपाल, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट और ग्राम स्वराज, तो हम आजादी के बाद की पहली पॉलिटिकल पार्टी होंगे जो चुनाव आयोग में कहेंगे कि हमारी पार्टी भंग कर दीजिए, नेता बहुत अच्छे हैं, हमें राजनीति नहीं करना। अपना काम करें, या तो आप करिए या हम करेंगे। आप कर नहीं रहे हैं, इसलिए हमें करना पड़ रहा है। आप जितने भी लोग यहां पर हैं, आपसे उम्मीद है कि आप थोड़ी सी अगर मेहनत करेंगे, थोड़ा सा अगर जागेंगे, थोड़ा सा वक्त आप देंगे अगर, तो शायद हम कोई बड़ा काम कर पाएंगे। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर के पहले हफ्ते में अपना समय निकालिएगा, अपना वक्त निकालिएगा दिल्ली आने के लिए, क्योंकि जिस समय आप यहां से जाते हैं और द्वारिका के एक फ्लैट में आप कॉल बेल दबाकर कहते हैं कि मैं बोस्टन से आया हूं, मैं डलस से आई हूं, मैं शिकागो से आई हूं, मुझे भारत नहीं लौटना है, मेरे पास नागरिकता है, लेकिन मैं इसलिए आई हूं कि मैं वहां रह के भी एक अच्छा भारत देखना चाहती हूं, तो उस जगह के लोगों को उम्मीद जगती है कि सचमुच ये बात दूर तक गई है, आपकी बात सुनी जाती है। इसलिए आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं पैसा कहां से आएगा? लोग दे देंगे, आप दे देंगे, नहीं होगा पैसा तो भी लड़ लेंगे। साधन पवित्र हो, साध्य पवित्र हो तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो गांव से आता हूं, हमारे यहाँ कहावत है कि एक बड़े अहंकार में एक पहलवान आ गया था, उसने गांव भर से कहा कि जिसने माँ का दूध पिया वो मुझे हरा के दिखाए। बड़ा पहलवान था, लोग लड़ नहीं पाए, तो गांव के एक सेठ जी थे, पतले दुबले, कोई थे अग्रवाल बंधु, अरविंद जैसे रहे होंगे। उन्होंने कहा होगा गांव की इज्जत का सवाल है तो मैं लड़ लेता हूं, तो उन्होंने कहा मैं लड़ लेता हूं। 1 लाख रुपए का पुरस्कार था, जो हारेगा उसको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, जो जीतेगा उसे 1 लाख मिलेगा। अब कुश्ती प्रारंभ हुई तो सेठ जी ने पहलवान के कान में कहा कि तू मूर्ख आदमी है, 1 लाख रुपए के ऊपर कुश्ती लड़ रहा है, कल मेरी दुकान पे आना, 5 लाख ले जाना पर हार जा। पहलवान को स्कीम समझ में आ गई, वो नीचे लेट गया, सेठ जी ऊपर, भारत माता की जय हो गई। 3 दिन बाद पहलवान पहुंचा, उसने सेठ जी से कहा सेठ जी पैसे? बोले कैसे पैसे? बोले वो जो आपने अखाड़े में कहा था कि 5 लाख दूंगा। बोले वो अखाड़ा था, तूने अपना दाव चला, मैंने अपना दाव चला। तो ये दाव चलेंगे शराब का, ये दाव चलेंगे जाति का, ये दाव चलेंगे कंबल का, ये दाव चलेंगे धर्म का, हम दाव चलेंगे सत्य का, हम दाव चलेंगे ईमानदारी का, हम दाव चलेंगे समर्थन का, हम दाव चलेंगे इन लोगों का जो अपनी 14-15 घंटे की फ्लाइट पकड़कर दिल्ली से, यहां से दिल्ली पहुंचेंगे। किसी पार्टी के पास ये समर्पित काडर नहीं है। दिल्ली के मेट्रो में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लेकर कोई कार्यकर्ता चढ़ता है तो हर अच्छा पिता और मां अपनी बेटी को दूसरी तरफ बिठा लेते हैं, लेकिन हम लोग जब टोपी लगाकर चलते हैं, हमारा कार्यकर्ता जब टोपी लगाकर चलता है तो मेट्रो में छोटे बच्चे मुस्कुराकर उसे जय हिंद कहते हैं। ये अंतर हमने किया, ये आत्मविश्वास हमने पैदा किया, और यही होना बहुत जरूरी है। आप सबने मनोयोग पूर्व मेरी बात सुनी, समय की सीमा है, मुझे निकलना भी है। मैं केवल ये आपको कहना चाहता हूं कि हमने और आपने पाया ये है कि कुछ देशभक्ति के मंत्र यहां हमने आकर बांचे तो हैं, कुछ देशभक्ति के मंत्र यहां हमने आकर बांचे तो हैं, हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं,
इस भ्रष्ट तंत्र के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर इसके मुंह पर मारा तो है। तो पूरी दुनिया में परचम फहराने वाले हमारे प्रवासी भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारे साथियों को मैं ये शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं, जो उम्मीद कभी अशफाक ने की थी, जो उम्मीद कभी हमारे बाबा भगत सिंह ने की थी कि इलाही वो होगा, कभी वो दिन भी देखेंगे जब अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां होगा। तो मैं वो सपना देखता हूं, ना तो मुझे मंत्री बनना है, ना मुझे कोई पद लेना है, मैं सिर्फ ये सपना देखता हूं कि एक दिन राजघाट पर एक आम आदमी तिरंगे के नीचे खड़ा होकर शपथ ले रहा होगा। मैं वो सपना देखता हूं कि हमारा मुख्यमंत्री किस दिन मेट्रो में जा रहा होगा। मैं वो सपना देखता हूं कि हमारे विधायक जी ने अगर गलती से कोई चीज कहीं रख दी होगी तो एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होकर उनका चार्ज काट रहा होगा, उनका टिकट काट रहा होगा। ये डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र हम देखेंगे और इसमें आप सबकी शिरकत बहुत जरूरी है। वक्त बहुत कम है, काम ज्यादा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हमारे लिए काम करिए, कोई ऐसा काम नहीं है, अपने लिए काम करिए। और दिल्ली में भी आप याद रखिएगा, मैंने पहले भी कहा था, दिल्ली में मतदाता इस बार दिल्ली के इस मूड में है, अंडर करंट ऐसा है कि किसी भी पार्टी का प्रत्याशी वोट मांगने जाएगा तो मुस्कुराकर यही कहेगा दिल्ली का नागरिक कि जी आप दरवाजे तक आए, बहुत अच्छा, वोट मैं आप ही को दूंगा, वोट आप ही को जाने वाली है। और अगर आपने दिल्ली जीती, अगर आपने इस रावण की नाभि में तीर मार दिया, तो उसके बाद तो हिंदुस्तान में स्वराज का सूरज आने में बहुत समय नहीं लगेगा। इन शुभकामनाओं के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय। ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान के पद पर जा रहे हैं और सिर्फ करप्शन के चार्जेस उजागर कर रहे हैं और फिर फाइनली क्या हुआ रिजल्ट आपने मालूम है कि थोड़ा बहुत सीटें तो जीती उन्होंने, जनलहर भी थी, फेसबुक के उनके पास 10 मिलियन यूजर भी हैं, उसके बाद भी वो स्वीप नहीं कर पाए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा, ये चिंता सबको है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस करके देखना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और हमारी डेमोक्रेसी में अंतर है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी कभी शेक नहीं हुई। 1977 में जरूर एक झटका आया था, लेकिन एक पूरी रिवोल्यूशनरी की फौज आई जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, और फिर आपातकाल कभी रिपीट नहीं हुआ। इसलिए पाकिस्तान से लोग उसे कंपेयर नहीं कर सकते। और मैं फिर ये मानता हूँ कि चलिए कंपेयर भी कर लेते, लेकिन क्या ये कम बड़ी बात है कि जरदारी और नवाज शरीफ के बीच झूलती हुई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक प्लेयर आउट हो गया। आज इमरान खान वहां सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर अपोजिशन में आ गए, तो 5 साल वो अपोजिशन सीखेंगे और फिर वहां पहुंचेंगे। इसलिए ये तय करना कि हम कहां पहुंचेंगे कहां नहीं, जब हमने चलना शुरू कर दिया है तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए चाहे राजनीति करनी पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, क्योंकि ये किसी ने नहीं सोचा था कि कोयले में दोनों चुप हो जाएंगे, एक पार्टी सड़क पर उतरेगी, लाठियां खाएगी, एक वकील जाकर खड़े होंगे प्रशांत भूषण, और देश के कानून मंत्री की नौकरी चली जाएगी और खदान रद्द हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि उम्मीद बड़ी है, और अगर हम सब ये सोचेंगे कि वन फाइन डे सरकारें बनेंगी आम आदमी की और उत्तरदायित्व तो उनके अंदर आएगा, तो मुझे लगता है कि सूरज निकलेगा। सर आई हो जी। कुमार जी नमस्कार। शिकागो की धरती पे कई लोग आए और कई चले गए, लोगों ने इतिहास बना दिया। आम आदमी का नेता भी आज यहाँ आकर इतिहास बना रहा है। हमारा सवाल आपसे विशेष रूप से है, क्या आप ये समझते हैं कि आपने जो ज्वाला जलाई है ये बुझेगी नहीं? क्यों नहीं बुझेगी? क्योंकि आपका ध्येय स्पष्ट रूप से सत्य है, एक आधार पे है कि हिंदुस्तान में इतना करप्शन हो गया, इतना पॉलिटिकल करप्शन हुआ जिसका कोई निचोड़ नहीं है। मैं आज अमेरिका में NFI का प्रेसिडेंट हूं, 2.4 मिलियन पीपल हमारे मेंबर है इसके। हम सब लोग आपसे पूछते हैं इसका क्या उपाय है ये करप्शन मिट जाए। एक तो आपके सवाल का जवाब आपने, प्लीज बैठिए सर, थैंक यू, आपने खुद दे दिया कि इसका कैसे विश्वास दिलाया जाए कि ज्वाला बुझेगी नहीं। अगर आप इस एज में भी आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हो गए तो ज्वाला बुझेगी कैसे?
अगर आप भी साथ दे रहे हैं, जवानों की तो बात छोड़िए, तो फिर ये कैसे पूछने वाली है। और दूसरे आपने कहा कि करप्शन मिटेगा। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जो गांव कस्बों से आए, शहरों से आए, वो ये बात मानेंगे कि हिंदुस्तान का आम आदमी बेईमान नहीं है। वो किसी का 10 रुपया भी न रखना चाहता। वो देश है जहां लोग प्याऊ लगाते हैं, वो देश है जहां सुबह उठकर लोग चींटियों के लिए आटा डालते हैं, वो देश है जहां आदमी इस तरह से सोच नहीं सकता। लेकिन जब आपने असामान्य वितरण कर दिया, आप में से शायद बहुत कम लोगों को पता हो, 1 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर लॉन्च हुई है हिंदुस्तान में। 8 महीने की उस पर बुकिंग है, 8-9 महीने की। इसका मतलब एक वर्ग बहुत अमीर है। लेकिन गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद में रहने वाले लोग, जहां मैं रहता हूं, वहां 50,000 कमाने वाले हर घर में 4,000 रुपए की एक बिटिया नौकरी करती है, जो छत्तीसगढ़ से आती है, पश्चिमी बंगाल से आती है, जिसमें से 2,000 रुपए उसका दलाल लगता है, 2,000 रुपए उसके घर के जाते हैं। ये भी असमानता है। तो ये जो असमानता मिटी है, दामिनी को हम नहीं बचा सके। शर्माई हमें इस बात पर कि हमारी एक बहन लड़ती रही 6 दरिंदों से, हमारे पास कानून नहीं था कि हम रेप रोक सकते। शर्म मुझे इस बात पर भी आई कि हमारे पास एक ऐसा अस्पताल नहीं था जो 80 किलोमीटर के सिंगापुर के पास था। वो देश क्या सोचता होगा हमारे बारे में कि सुपर पावर बनने के लिए चले, इनके पास एक हॉस्पिटल नहीं है ठीक सा। लेकिन मुझे खुशी इस बात पर हुई कि दामिनी के बाद एक नया संकेत गया। यह भी हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े दरवाजे पर, राष्ट्रपति भवन पर, 19-20 साल की लड़कियों ने सुबह 9 बजे जाकर लात मारी कि महामहिम दरवाजा खोलिए, आपसे बात करने के लिए आए। ये भी भारत में पहली बार हुआ। तो इससे उम्मीद है, आपने जो बात कही है, ज्वाला अपने आप जगने लगी है। दामिनी के प्रसंग के समय ना अरविंद गए थे, ना योगेंद्र भाई गए थे, ना स्वामी रामदेव गए थे, ना अन्ना हजारे गए थे। किसी ने लिखा था, रात को किसी ने अपने ग्रुप में लिखा, किसी ने फेसबुक पर लिखा कि तो बहुत गलत बात है, हम राष्ट्रपति से हिसाब मांगने जाएंगे, सरकार से उम्मीद नहीं बची। और मैंने वो नजारा देखा, मैं वहां था, आप में से कुछ लोगों ने देखा हो तो हमको लाठियां भी पड़ी, मुझे और मनीष को। हम वहां पर थे, 1 लाख से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं सामने भी वर्ल्ड जस्टिस कहती है। तो जो हमारा डर है, पहले जो डर था कि ये नेता इससे कैसे बोलेंगे, इससे कैसे जवाब दें, ये वी द पीपल का डर निकल गया है। और अरविंद के उपवास के बाद आई अपोज की आवाज आनी शुरू हुई। अकेला एक आदमी कहता है कि मेरा बिल 16,000 रुपए का आया है, ये झूठा बिल है, शीला दीक्षित मैं नहीं देता। 11.5 लाख लोग लिख के दे रहे हैं इस बात को कि शीला दीक्षित तुम बिल गलत दे रही हो, मैं तुम्हारा बिल नहीं दूंगा। ये कम बात नहीं है। और मुझे लगता है ऐसी शुरुआत को नमस्कार करना चाहिए, ये आगे चल के बढ़िए। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि योगेंद्र भाई अब सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि मुझे निकलना है और मैं रात भर भी जगा हुआ था, मैं क्लीवलैंड में था। और जैसा कि रमेश मुस्कान हमारे कवि बैठे हैं, मैंने इनसे कहा कि यार कवि सम्मेलन मुझे क्यों करने पड़ रहे हैं। बोले भाई साहब नौकरी आंदोलन खा गया तो पेट के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि योगेंद्र भाई मेरे वरिष्ठ नेता आपके साथ हैं, आपके सहयोगी, वो आपको जवाब देंगे। बहुत बहुत अरविंद हमारे साथ हैं, एक बार जोरदार तालियों से अरविंद का स्वागत कर लीजिए। आई होप कि अरविंद में देख पा रहे हैं। या अरविंद आप सुन पा रहे हैं? मैं कुमार विश्वास बोल रहा हूँ, लोग आपको बहुत प्रणाम कर रहे हैं, तालियां बजाकर आपका स्वागत कर रहे हैं। आप शुरू कर सकते हैं। भारत माता की। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 30 से 40 साल से अमेरिका में रह रहे हैं। आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली है, लेकिन उस सब के बावजूद आप सब लोगों के सीने में एक हिंदुस्तानी दिल धड़क रहा है। और वही कारण है कि आज आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इतनी दूर दूर से चल के आए हैं। पूरी यूनिवर्सिटी लोग आज शिकागो में इकट्ठे हुए हैं, उसी वजह से क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि भारत खुले। पिछले 2 साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है अन्ना जी के नेतृत्व में। आप लोगों ने वहां पे सांस्कृतिकों में गांधी मार्च किया। जब अन्ना जी 2011 में अगस्त में 16 अगस्त पेंशन पर बैठे, तो उसके पहले 12 अगस्त को न्यूयॉर्क में आप लोगों ने यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर के सामने धरना दिया, प्रोटेस्ट किया। जब अन्ना जी अंचल पर बैठे 25 शहरों में, अमेरिका के 25 शहरों में आप लोगों ने धरना दिया। क्यों दिया? वो इसीलिए दिया क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो, हमारे देश से करप्शन खत्म हो। इसलिए दिया क्योंकि आप सब लोगों के दिलों में हिंदुस्तान दिल धड़क रहा है। आज हम सब लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि
क्योंकि एक उम्मीद है, बहुत सालों के बाद, आजादी के बाद एक उम्मीद बनेगी। जब प्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ था, उस टाइम लगा था कि कुछ बदलेगा। आज एक दूसरी उम्मीद आई है, इसलिए हम सब लोग इकट्ठे हुए कि उम्मीद है कि इस बार भारत जरूर बदलेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता है यूएसए में वो सब लोग इकट्ठे हुए हैं और हम लोगों की पहली, हमारी पार्टी की, हमारी आपकी, हम सबकी आम आदमी की पार्टी की आज पहली कन्वेंशन अमेरिका में हो रही है। रोज हम लोग देश के अंदर अलग अलग स्कैम के बारे में सुन रहे हैं। दो चीजें साथ साथ हो रही हैं। एक तरफ रोज नए नए स्कैम निकल के आ रहे हैं। अभी पिछले दिन हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारे देश के लगभग सारे बैंक हवाला कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। इट वॉज वेरी 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 स्केरी स्टोरी। अगर हमारे देश के सारे बैंक, इवन पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सब बैंक मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़े गए हैं। सब बैंक टैक्स की चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली मनी लॉन्ड्रिंग करवा रही है। क्यों करवा रही है? क्योंकि हर नेता ने चोरी की हुई है, हर नेता ने करप्शन किया हुआ है और इन बैंक के थ्रू वो अपना ताजा पैसा सप्रेस कर रहे हैं। रोज नए स्कैम निकल के आ रहे हैं। तो एक तरफ बहुत डिप्रेशन होता है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है, लगता है कि क्या देश सुधरेगा। लेकिन दूसरी तरफ इस आंदोलन ने इस देश को उम्मीद दी है। सारे देश की जनता इकट्ठी हुई है। 3 साल पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा टाइम आएगा जब देश के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। आज एक ऐसी उम्मीद बनी है कि देश बदल सकता है। दिल्ली के अंदर ही लगभग 7,000 कार्यकर्ता, नव लड़के लड़कियां अपनी नौकरियां छोड़ के, अपने बिजनेस छोड़ के, अपने, मैं जानता हूं कई बच्चों को, एक लड़का है जो अपने गांव से दिल्ली में सिविल सर्विस के एग्जाम देने के लिए आया था, यहाँ पे आके अन्ना के आंदोलन से जुड़ गया और अब उसने 3 साल के लिए अपने सिविल सर्विस के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है। एक विजय बाबा है, वो रिक्शा चलाया करते थे, आजकल उन्होंने अपनी रिक्शा 15 दिन सुबह शाम तक वो पार्टी के लिए रिक्शा चलाते हैं और वो पार्टी के बहुत कहने में भी पैसा नहीं देते। मैंने पूछा विजय बाबा गुजारा कैसे करते हैं, खाना कहाँ से खाते हैं? कहते हैं खाना तो कोई भी दे देगा सुबह शाम तक। एक लड़की है जो कि मेटलाइफ के अंदर काम किया करती थी, वो अपनी नौकरी छोड़ के और इस आंदोलन के अंदर लगी हुई है। इस तरह के 7,000 कार्यकर्ता, लड़के लड़कियां अपनी अपनी नौकरियां छोड़ के इसके साथ आंदोलन के साथ लगे हुए हैं। तो एक तरफ जहां हम लोग घोटाले देख रहे हैं, स्कैम देख रहे हैं और डिसअपॉइंटमेंट होती है, दूसरी तरफ इस आंदोलन ने एक नई उम्मीद दी है कि इस बार भारत बदल सकता है। दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं हम लोगों के ऊपर और शायद हम लोगों ने सुना होगा, इसमें मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं यहाँ क्लियर कर दूं। कुछ लोग कहते हैं हम लोग लेफ्टिस्ट हैं। हम लोग मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हम किसी इज्जत में विश्वास नहीं रखते हैं। ना हम लेफ्टिस्ट हैं, ना हम राइटिस्ट हैं, ना हम सेंट्रिस्ट हैं। हम इस देश के आम आदमी हैं। हमारे सामने समस्याएं हैं। हमें रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें सड़कें चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें पानी चाहिए। हमारी समस्या है। अगर कोई नेक्स्ट वाला आदमी कहेगा कि मेरे पास इस समस्या का समाधान है और अगर हमें लगेगा वो समाधान अच्छा है, हम उसको ले लेंगे। अगर कोई राइट वाला आदमी हमें कहेगा कि मेरे पास समाधान है, अगर हमें उसका समाधान अच्छा लगेगा, हम उसका समाधान ले लेंगे। लेकिन एक चीज है जो हम बिल्कुल साफ साफ कर देना चाहते हैं कि हमें भी ये लगता है that government has no business to be in business. इस देश के व्यापारी, इस देश के उद्योगपति, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, ये सब लोग इस देश को खबर लिए हुए हैं। यही लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं, यही लोग वोट जनरेट करते हैं। तो ये कहना गलत है कि हम बिजनेस के खिलाफ है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम बिजनेस के खिलाफ है, बिल्कुल बिजनेस के खिलाफ नहीं है। लेकिन हम जब 1600 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम खरीद के एक हफ्ते के अंदर 6,000 करोड़ का बेचा जाता है तो हम उसको बिजनेस नहीं मानते, वो देश को लूटने की बात है। हम उसके खिलाफ हैं। हम उसके खिलाफ है जब बेईमानी से बिजनेस किया जाता है। हम चाहते हैं कि देश के अंदर ईमानदारी से बिजनेस हो। हम चाहते हैं 99% लोग इस देश के ईमानदारी से बिजनेस करना चाहते
चाहते हैं, ईमानदारी की जिंदगी जीना चाहते हैं, शांति की जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन आज उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं IIT खड़गपुर से मैंने 89 में पास आउट किया। उस टाइम मेरे 80% से ज्यादा बैचमेंट यूएस और दूसरे देशों में चले गए, मैं भारत में रह गया। आज भी जब मैं अपने बैचमेंट से बात करता हूँ, बहुत सारे लोग भारत वापस आना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं भारत में कैसे आए? भारत में अगर हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, जमीन के रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे देने पड़ेंगे, लाइसेंस लेने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, हर छोटी छोटी चीज के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो वो लोग वापस आना चाहते हैं, भारत में बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। इसलिए हमें एक ऐसी व्यवस्था कायम करनी पड़ेगी अपने देश के अंदर कि लोग ईमानदारी के साथ बिजनेस कर सकें। आप सब लोग यहाँ बैठे हुए, आप में से बहुत सारे लोग यूएसए में बिजनेस करते होंगे, आप लोग वहां पर ईमानदारी के साथ बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन भारत में जब आप आते हैं तो भारत में बिजनेस नहीं कर सकते। मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि भारत कभी नहीं बदल सकता, भारत के लोग खराब हैं। मैं बिल्कुल नहीं मानता, भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब यही भारत के लोग अमेरिका जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, जापान जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, तो ये हर फील्ड में एक्सेल करते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग अपने फील्ड में एक्सेल करते होंगे, लेकिन अपने देश में हम कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे ये लगता है कि थर्ड क्लास पीपल विक्टिम्स ऑफ थर्ड क्लास गवर्नेंस, अगर हमारे देश के अंदर गवर्नेंस सुधर जाए तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारा देश पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 हो सकता है, सुपर पावर बन सकता है। तो हमें एक ऐसी व्यवस्था कायम करनी पड़ेगी कि ईमानदारी के साथ लोग अपनी जिंदगी जी सकें। उसके लिए बहुत जरूरी है कि देश की पॉलिटिक्स को बदलना होगा। आज हमारे देश की पॉलिटिक्स खराब है, इसी वजह से शिक्षा खराब है, इसी वजह से स्वास्थ्य खराब है, हेल्थ सर्विसेज खराब है क्योंकि पॉलिटिक्स खराब है, एजुकेशन खराब है क्योंकि पॉलिटिक्स खराब है, सड़कें खराब है क्योंकि पॉलिटिक्स खराब है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गरीबी है, अशिक्षा है क्योंकि पॉलिटिक्स खराब है। इस पॉलिटिक्स को बदलना पड़ेगा, और एक बहुत छोटे से तरीके से हम लोगों ने पॉलिटिक्स को बदलना तो शुरू किया है। वेरी स्मॉल मेजर, आई थिंक बिगिनिंग इन दैट डायरेक्शन, और वो दिल्ली के चुनावों से शुरू हुई है। पहली बार हम लोगों ने राजनीति के अंदर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की शुरुआत की है। पिछले 5 सालों के अंदर कांग्रेस को 2000 करोड़ रुपए के डोनेशन मिले, बीजेपी को 800-900 करोड़ रुपए के डोनेशन मिले। जब उनसे पूछा गया आपको कितने डोनेशन दिए, दोनों पार्टी डोनर की लिस्ट बताने के लिए तैयार नहीं है, और सुनने में आ रहा है कि जिन लोगों को कोरोना नहीं है उन लोगों ने इनको डोनेशन दिए हैं। पार्टी के सब कुछ ब्लॉक हो, ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, गलत फायदा पहुंचाते हैं, और वो कंपनी वो इंडस्ट्रियलिस्ट इनको डोनेशन देते हैं। पहली बार हम लोगों ने फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी शुरू की है। आज अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो एक एक पैसे का आपको डोनेशन, किसने हमें डोनेशन दिया, लिस्ट ऑफ डोनर्स इज देयर ऑन वेबसाइट। 1 रुपया भी जिसने हमें डोनेशन दिया उसका भी हिसाब हमारी वेबसाइट के ऊपर है। दूसरी चीज, जब भी चुनाव होते हैं तो एक कैंडिडेट को 2 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं टिकट खरीदने के लिए। 4 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च करता है, 6 करोड़ रुपए अगर कोई कैंडिडेट खर्च करेगा तो जीतने के बाद वो 20 करोड़ रुपए तो कम से कम कमाएगा। इसको हमें अभी खत्म करना पड़ेगा, यहीं से शुरुआत से ही खत्म करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने कैंडिडेट सिलेक्शन का प्रोसेस जो रखा है वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। पहली बार हम लोग जनता से एप्लीकेशन मंगवा रहे हैं कि अगर कोई भी अप्लाई करना चाहता है तो आप अप्लाई कीजिए, और बहुत ही किस्म किस्म के लोग अप्लाई करता है। वेरियस सेक्शन ऑफ द पीपल आर फ्रॉम द सोसाइटी दैट अप्लाइंग फॉर बीइंग कैंडिडेट्स इन दीज इलेक्शन। अभी 70 कंस्टिट्यूएंसीज हैं दिल्ली में, ऑलरेडी 375 एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी है अलग अलग लोगों की। इन सारी एप्लीकेशन के ऊपर अभी एक कैंडिडेट स्क्रीनिंग कमेटी बनी है। वो केवल ये स्क्रीन कर रही है कि कोई कैंडिडेट ऐसा तो नहीं है जिसके ऊपर पुलिस केस चल रहा है, कोई कैंडिडेट करप्ट तो नहीं है, तो दे आर गेटिंग देयर ओन इंक्वायरीज मेड। ऐसे कैंडिडेट को हम स्क्रीन आउट कर रही है, और बाकी लोगों को हम वेबसाइट पे डालेंगे। तो फर्स्ट लिस्ट, आई थिंक 10 या 12 कंस्टिट्यूएंसी की फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट, हर कंस्टिट्यूएंसी से 3, 4, 5 नाम हम 22 या 23 जून को मई को अपनी वेबसाइट पे डालेंगे, आप लोग देख सकते हैं। उन सारे कैंडिडेट की शॉर्ट
इस पर हम जनता से फीडबैक मांगेंगे। हम जनता से कहेंगे कि भाई इस विधानसभा की ये शौर्यत है, आपको अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो प्लीज गिव फीडबैक ऑन दिस कैंडिडेट। इफ एनीवन ऑफ देम इज बैड वी विल क्लीन आउट दैट पर्सन। अगर एविडेंस के साथ कोई देगा कि ये गलत आदमी है, हम उसको क्लीन आउट कर देंगे। हमने ये डिसाइड किया है कि इस बार एक भी क्रिमिनल को हम टिकट नहीं देंगे, एक भी करप्ट आदमी को टिकट नहीं देंगे। तो एक तरह से अच्छी पॉलिटिक्स को बदलने की एक अच्छी शुरुआत है। एक तरफ जहां हमने करते हैं, हम दूसरी पार्टियों को चुनौती देते हैं। हमने कहा कि हमने अपने सारे काम वेबसाइट पर डाल दिए। अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो वो भी डाल के दिखाए, बीजेपी में हिम्मत है वैसे करके दिखाए। हमने कहा एक भी क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगे, बाकी पार्टियां भी डिक्लेयर करें कि एक भी क्रिमिनल को टिकट। हमने कहा कि हम एक फैमिली से 2 लोगों को टिकट नहीं देंगे। वो पार्टियां भी बोल रही कि वो एक फैमिली से 2 लोगों को टिकट नहीं देगी। अगर वो ऐसा करेंगी तो या तो सोनिया गांधी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, राहुल गांधी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, या शीला दीक्षित को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो साथियों, एक काफी अच्छी शुरुआत है, हम सब लोगों को मिलकर इसको करना पड़ेगा। मुझे पूरा यकीन है, पहले कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 5 सालों के अंदर भारत भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा और वापस सोने की चिड़िया कहलाएगा। हम सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। हम लोग आज फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इस तरह से रख पा रहे हैं क्योंकि हम ईमानदार पैसा ले रहे हैं। लेकिन क्लीन मनी, वी वांट क्लीन मनी। हमें साफ पैसा चाहिए, हमें 2 नंबर का पैसा नहीं चाहिए। जब मैं भी अंचल से बैठा था 15 दिन के लिए, जब मैं जब ये बिजली पानी का आंदोलन चला, तो उस वक्त मेरे पास एक इन्वेस्टरिस्ट आए और उन्होंने कहा कि मैं आपको 10 करोड़ रुपए देना चाहता हूं, लेकिन मेरा नाम वेबसाइट के ऊपर नहीं आना चाहिए। मैंने उनको कहा कि हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। अगर हम आपसे पैसा लेंगे तो ये आपका नाम कहीं वेबसाइट के ऊपर आएगा। अगर अभी हम लोग कहीं फिसल गए तो बस सिर्फ शुरुआत है, फिसलने की गड़बड़ हो जाएगी। वी वॉन्ट क्लीन मनी, वी वॉन्ट ऑनेस्ट मनी एंड वी वॉन्ट कंप्लीट फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। और हम सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। इसलिए मेरी आप लोगों से निवेदन है कि हम लोगों को इस चुनाव के लिए मिलकर और पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप अपने दोस्तों को कहिए, फोन कीजिए, अपील कीजिए कि सब लोग इन चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी को डोनेशन दें। आपके समय की भी जरूरत है। आप इसके बारे में, अगर आपके जितने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं इंडिया के अंदर, उनको सबको कहिए कि आने वाले दिल्ली के चुनावों में वो अपना अपना समय दें। आपके समय की भी जरूरत है, पैसे की भी जरूरत है। और प्लीज स्प्रेड द वर्ड टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। मुझे पूरा यकीन है, मैं बहुत आशावादी, मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी भारत बदलेगा और भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Any questions that we can take this question? You'll have to announce your name and the place from where you are, and then you can ask your question. Good morning, Arvind ji. Good morning. How are you? I'm fine. My name is Minhaj Akhtar. जैसा कि आपने अभी कहा कि हम हिंदुस्तानी कई साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो मैं भी कुछ 22 साल से रह रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरी जो सिटीजनशिप है वो इंडियन ही है। और मैं ये महसूस करता हूँ कि यहाँ से ज़ायद जो भी हिंदुस्तानी यहाँ पे आया है वहाँ पे जरूरत है, क्योंकि वो एक कामयाबी हिंदुस्तान है। जैसा कि आपने बताया अभी कि यहां से जो मैसेज जाता है वो बड़ा पावरफुल होता है। जैसा कि हमने यहाँ के सदर को देखा
जब वो हिंदुस्तान गया तो हमारी फिजा भी अच्छी हो गई। एयर पोल्यूशन, एयर में जो भी ये वो भी साफ कर दी गई। तो हमारा भी जब यहां से एक मैसेज जाता है तो उतना ही पावरफुल होता है और हम सब आपके साथ हैं। आप ये पूछ रहे हैं कि जैसे रेडी बिजनेस का स्कैम है, उस स्कैम के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, इज इट राइट? ओके, देखिए दो चीजें हैं। अभी तक जब भी कोई स्कैम होते थे, देश के अंदर कोई एजेंसी कुछ काम नहीं करती है तो हम लोग पीआई फाइल करते थे। प्रशांत भूषण ने दोनों पीआई फाइल की हुई है। 2G घोटाले के ऊपर पीआई फाइल की हुई है, माइनिंग स्कैम के ऊपर पीआई फाइल की हुई है, इरिगेशन स्कैम के ऊपर पीआई फाइल की हुई है, बहुत सारे स्कैम के ऊपर पीआई फाइल की हुई है। पीआई चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल। और सुप्रीम कोर्ट फिर सीबीआई को बोलता है कि सीबीआई को बोलता है आप इसकी जांच कीजिए, और सीबीआई प्रधानमंत्री को जाकर रिपोर्ट दिखा देती है और प्रधानमंत्री उसमें रिपोर्ट बनाते हैं, लॉ मिनिस्टर उसमें रिपोर्ट बनाते हैं सीबीआई के। सीबीआई जांच थोड़ी करती है, सीबीआई तो बोलते। तो धीरे धीरे समझ में आने लगा कि पूरी व्यवस्था के अंदर जो सिस्टम से भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकते। इस देश की पॉलिटिक्स को बदलना पड़ेगा। 2 साल तक अन्ना हजारे जी के साथ हम लोग क्या मांग कर रहे थे? हम लोग यही तो कह रहे थे जन लोकपाल बिल बनाओ, एक ऐसा कानून बनाओ कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल होनी चाहिए। इतना मांग कर रहे थे। ये कोई गलत मांग तो नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। 2 साल में 3 बार एनर्जी ने एक्शन किया, 2 बार मैंने एक्शन किया, लेकिन ये लोग नहीं माने। धीरे धीरे साफ हो गया कि इस देश की सारी पार्टियों में, नेताओं ने भ्रष्टाचार किया हुआ, ये कभी नहीं मानने वाले। जब तक इस देश की राजनीति को साफ नहीं किया जाएगा तब तक समाधान नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों को आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी और अब सब लोग इस देश के आम आदमी, आम औरतें, आम बच्चे, आम बूढ़े सब लोग मिलकर इस देश की राजनीति को बदलेंगे और इन सारी करप्ट फोर्सेज जितनी है, सारी करप्ट फोर्सेज को साफ करेंगे। As an NRI, how can we contribute to AAP party workings? जैसे हम वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं, वर्ड्स भी स्प्रेड कर रहे हैं, डोनेट भी कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जैसे और भी काम है, जैसे वहाँ पे अनशन होते हैं, वहाँ पे करना होता है, तो हम उसमें कैसे डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या जैसे मैनिफेस्टो बन रहे हैं तो हम उसमें डायरेक्टली कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो जो आपने अभी बताया बहुत सारे ऑप्शन हैं, बिकॉज क्योंकि हमारी सबकी पार्टी को क्लीन मनी चाहिए और तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्लीन मनी देने के लिए वो कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरा, आप जितने आपके दोस्त और वो है दिल्ली के अंदर, उनको आप कहीं से वो वॉलंटियर बन जाए। तो इसलिए हमें ढेर सारे वॉलंटियर की जरूरत है। हमने एक एस्टीमेट कराया 1.25 लाख वॉलंटियर हम तैयार कर रहे हैं चुनाव के लिए। 1.2 लाख वॉलंटियर्स फ्रॉम अक्रॉस द सिटी। सो जो पीपल जहाँ भी आपके लोग रहते हैं वो अगर किसी में पार्टिसिपेट कर सके एंड स्प्रेड द वर्ड एंड इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिसी मेकिंग ऑफ द पार्टी जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर है, तो ही योगेंद्र भाई हेरिटेज एस्टीमेट है, आप उनसे बात कीजिए एंड ही इज द पर्सन हु monitoring the work of various committees on such policy issues. From Chicago, Arvind ji, please take my solemn oath. I want to ask a very precise question. What is your plan in scaling out this party? Like what I have seen so far is when a party starts with noble objective like Aam Aadmi Party, once it scales out to different states and different regions, and then slowly the high standard gets lowered and people with wrong intention gets into the party. For 2 reasons. One is the campaigning needs a lot of money, and normally people who needs illegal favor when you come to the power gives those money. That is very practical. So without that money you cannot campaign, and without campaigning again you cannot scale out your party. So what is your, and secondly, like powerful people needs special status in a party in order to favor it in any case. So what is your part, without doing all those things, how do you think that you can scale out this effort, this noble effort to this whole country? I really appreciate that. It's a very good question. I completely appreciate the problem that you are saying.
huge energy that has been created by anti-corruption movement. That is the reason I said that there are almost 7,000 young boys and girls who are working in Delhi as volunteers and even up in Britain who are just their job. Now this political energy cannot be sustained for long. That is the reason I keep saying that it is now or never. इसीलिए हमें पूरी एनर्जी लगानी है इस बार दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए। अगर हम दिल्ली का चुनाव जीतते हैं, then we will change the system. Today systems are bad and the systems are forcing many people to turn corrupt. अगर हमने इस system को ठीक कर दिया, today the rotten system in our country will encourage corruption and will protect the corrupt people. You have to change the system so that the system starts encouraging honesty and it protects honest people and it punishes corrupt people. अगर हमने system को change कर दिया अंदर जाके, तो उसके बाद फिर जो आपकी प्रॉब्लम है, आपने एक प्रॉब्लम बताई है कि पार्टी करप्ट हो जाएगी, पार्टी में गलत लोग आएंगे, तो पार्टी करप्ट इसलिए होती है, पार्टी में गलत लोग इसलिए आते हैं कि उनका सिस्टम सारा करप्ट है। अगर हम अंदर जाके सिस्टम को चेंज कर दिया तब उसको नहीं लगता कि ऐसी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर इस बार हम लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में दूसरा मौका नहीं आने वाला। I think that is the reason I keep saying this is our last chance, it is now or never. So let us all put our best in winning these elections. A small announcement, please. If you're too noisy, please don't go around the donation boxes. We'll be bringing it around. There's a huge crowd there, please. Hi, Arunji. My name is Salih Sharif and I'm from Chicago. First of all, thank you for taking the initiative to solve one important problem for us. The youth is really behind me on this. My question is the following. The battle for corruption is effectively taking the country from -10 to 0. Because this is a problem and it stops the country from working. What is your plan of action from taking the country from 0 to 10? Let's assume that you have 100% of all the seats in Rajya Sabha and Lok Sabha and everybody is in favor for you. We're ready to redraft the constitution or any laws. What is your plan or what is your change in the current system and policy that will help us take this country from -10 to +10 now? Thanks. I think that's a huge question and there are many things that need to be done. But as far as corruption is concerned, I think at a very broad level, if we do two things, it will have a huge impact. One is, today there is absolutely no deterrence to corruption. The people get away with murder. They indulge in corruption, they rob the country of thousands of crores, and absolutely nothing happens to them. The entire system protects these people. So if we pass a very strong anti-corruption law, that if anyone indulges in corruption, there should be certainty of punishment and it should happen very quickly. Swift and certain punishments to the corrupt people. That is what General Uppa bill was about. So one is that if one gets a chance, General Uppa bill should be passed within 10 or 15 days of coming to power. And the second is, there is too much centralization of power in the political power in the hands of politicians and bureaucrats. This entire political power needs to be decentralized. The people's participation in decision-making process of the government needs to be increased. For instance, in US, you have town hall meetings in every town, city, county. Now where you go, you can participate in the decision-making process. And I am sure that most of the towns, municipalities, counties, cities, it is the people who take most of the important decisions. In India also we should have that. That the people should have the power to take decisions about their own area and how the government will be spent in that area. If a particular government officer is not working, the people should be able to gather in that area and they should have the power to sack the government officer. So all this, you need to completely decentralize decision-making process in government. If these two things are done, I think we have now, and there are many other specific changes like computerization, etc., required. There are a lot of systemic changes which can help in reducing corruption. So if all these things are done together, I think we can have a corruption success. I'm not saying that we will be absolutely zero corruption, but we can substantially reduce the scope of corruption in government. Hey, this is Asim Arvind and I'm from Chicago. I just want to know what is your personal point of view of the division of the Indian masses
specifically in SC, ST, OBCs and other classes, which has been played very well and used by other political parties for their own gains? If you are hinting at reservation, let me make our stand on reservation very clear. We all agree that there are certain castes in our country, there are certain sections of the society who have suffered because of untouchability and injustice for ages together. इतना हम लोगों ने अन्याय सहा है और जो लोग शहरों में रहते हैं उनको ये भी पता है कि आज भी बिहार, उत्तर प्रदेश और कई सारे स्टेट के गाँव में आज भी उसी किस्म की अनटचेबिलिटी और उसी किस्म का अन्याय आज भी है। मैं गया था बिहार और उत्तर प्रदेश के कई गाँव में, आज भी जो कुछ कास्ट के लोगों को उस गाँव में रहने के लिए इजाजत नहीं होती, उनको गाँव के बाहर दिल्ली में रहना पड़ता है। वो आज भी कुआं से पानी नहीं ले सकते, वो आज भी साथ रहकर खाना नहीं खा सकते। तो उतनी ही अन्याय और उतनी अनटचेबिलिटी आज भी उन लोगों के साथ की जाती है। तो इसलिए रिजर्वेशन जो किया गया, वो रिजर्वेशन में जिन लोगों को रिजर्वेशन मिला उनको जरूर फायदा हुआ, उनको भी फायदा हुआ और उनके आसपास के कुछ परिवारों को फायदा हुआ, ये वो बेनिफिट फायदा है। लेकिन इसमें दो तीन चीजें हैं। हमारे देश के अंदर लगभग 15 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इन कास्ट से बिलोंग टू दिस कास्ट। अब एक साल में मोटे मोटे तौर पर पूरे देश में 2 से 3 लाख नौकरियां निकलती हैं जो कि इन लोगों को डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिलती है। अगर आप केवल रिजर्वेशन करेंगे तो रिजर्वेशन से हर साल 2 लाख लोगों को नौकरी देते 15 करोड़ लोगों तक हम कैसे पहुंच पाएंगे? तो इसलिए ये जरूरी है कि केवल और केवल रिजर्वेशन से हम इन सब बहनों और भाइयों को आगे नहीं जा सकते। एक चीज इसमें मदद कर सकती है और वो है एजुकेशन। अगर हम लोगों ने सारे स्कूल अच्छे कर दिए, अगर पूरे देश के अंदर हर गांव के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल है उस गवर्नमेंट स्कूल का अगर हम लोगों ने स्टैंडर्ड इतना अच्छा कर दिया कि उसमें पढ़ने वाले बच्चे जो उनके बच्चे हैं वो अगर एक जनरेशन पढ़ के बड़ी होगी तब वो हमारे सबके साथ खड़े होकर कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे लगता है शिक्षा एक ऐसी चीज है जो सबको बराबरी दे सकती है। दूसरी चीज, आज जो लोग SC ST में हैं जिनको जो एक इकोनॉमिकली जो अलग हो गए हैं उन लोगों को मुझे लगता है कि रिजर्वेशन का दोबारा जो नहीं मिलना चाहिए, बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। बिकॉज अगर आपको एक बार रिजर्वेशन का फायदा मिल चुका है तो दूसरों को भी उसका रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए, या तो एक बार रिजर्वेशन का फायदा मिले और इकोनॉमिकली बेटर हो। तीसरी चीज जैसा मैंने बताया, जो केरल में रहता है, उत्तर प्रदेश में रहता है, बिहार में रहता है, थोड़ी के अंदर उसको तो पता ही है रिजर्वेशन होगा क्या। ये रिजर्वेशन इन तक पहुंचेगा कब तक, कितने साल से पहुंचेगा रिजर्वेशन। इसलिए मेरा अपना ये मानना है कि शिक्षा एक ऐसी चीज है, अगर शिक्षा को ठीक किया जाएगा तो एक रिजर्वेशन के बाद मुझे लगता है सारे कास्ट के लोग इसके साथ बराबरी इससे खड़े होकर कम्पीट कर सकते हैं। और वो एक ऐसा टाइम होगा जब इस सेक्शन में ये बहन भाई अपने आप खड़े होकर बोलेंगे कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। When you are saying that many of these political parties actually are not interested for the upliftment of these castes. They are basically interested in only doing caste-based politics. उन्होंने रिजर्वेशन को और SC ST OBCs को केवल और केवल पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया। उनके लिए ये वोट बैंक है, हमारे लिए इंसान है। हम ये चाहते हैं कि इनको अच्छी शिक्षा दे। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनके भले की सोचती तो उनको अच्छी शिक्षा देती। गवर्नमेंट स्कूल को उन्होंने बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ दिया और फिर कहते हैं रिजर्वेशन देंगे। रिजर्वेशन जिनका कब तक फायदा हो सकता है? रिजर्वेशन होना चाहिए लेकिन केवल रिजर्वेशन से फायदा नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है कि शिक्षा केवल उनको सबको बराबरी के लिए बता सकती है। अरविंद जी नमस्ते, मेरा नाम अनुपम है और मैं मिशिगन से आया हूँ। तो पहला मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि काफी प्रोपेगेंडा है आम आदमी पार्टी के बारे में कि वो लेफ्टिस्ट है, एंटी बिजनेस है, और आपने आज काफी क्लियर किया कि ऐसा नहीं है। तो हमको जो है फेसबुक पे, ट्विटर पे अपनी इस इमेज के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि हम एंटी बिजनेस और प्रो लेफ्ट वाली इमेज ना हो हमारी। तो मेरा क्वेश्चन, तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन थी। और क्वेश्चन मेरा ये है कि वंदे मातरम का जो अभी इशू हुआ था तो उसके बारे में आम आदमी पार्टी और आपकी क्या राय है
क्या वंदे मातरम हमको बोलना चाहिए हमेशा? इसके बारे में आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि वंदे मातरम अगर कोई बोलना, वंदे मातरम बोलना चाहिए, बोलने में कोई जरूरी है, वंदे मातरम सब लोग गाते हैं, लेकिन अगर किसी को उससे ऑब्जेक्शन है, उसकी एक हिस्ट्री है, मैं वो हिस्ट्री में नहीं जाना चाहूंगा कि वंदे मातरम को बोलने से एक रिलीजन के लोगों को क्यों ऑब्जेक्शन होती है, वो आनंद मठ के टाइम से उसकी हिस्ट्री है। तो मेरा ये कहना है कि अगर किसी को उससे ऑब्जेक्शन हो रहा है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी नहीं चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जो लोग बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, जो नहीं बोलना चाहें वो ना बोले। जैसे हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं, अगर उसमें किसी को ऑब्जेक्शन है वो लोग मतलब एक और के लोग बोलते हैं मातृ वतन जिंदाबाद, तो अगर वो मातृ वतन जिंदाबाद बोलते हैं उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, भारत माता की जय बोलते हैं उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों को नॉन इश्यूज में बांध के, नॉन इश्यूज में सता के, और वो लोग ये चाहते हैं कि हम लोग ट्वेल्थ क्या भूल जाए, हम लोग संगीत क्या भूल जाए, हम लोग उसकी बात ना करें। तो वो बार बार उसको हमें रीजन बेस्ड और कार्ड बेस्ड पॉलिटिक्स की तरफ खींचने की कोशिश करता है, और हम बार बार अपने हम मुद्दे को हटा के कहते हैं ये बताओ कि कोयले के घोटाले में किसने चोरी की, क्योंकि घोटाले के अंदर किसने चोरी की। तो आई थिंक हमें मेन इश्यूज जो है हमारे देश के अंदर उस पर लोगों को बार बार फोकस करवाना पड़ेगा। Namaste, Arvind Kejriwal ji. My name is Vinay Pucha. I'm from Chicago. I need some suggestion from you. So outside the political system, can you suggest me, like a person like me, who can get involved into non-governmental organizations and focus on certain areas that you want us to focus on that have to be urgently addressed? If you can give us a couple of areas that you think we should look into it, that would be great. Thank you. It will entirely depend upon your taste, your temperament. There are a number of NGOs who are working, there are a lot of NGOs who are charities, there are a lot of NGOs who are rights-based. So there are NGOs who are working in rural areas, there are NGOs who are working in urban areas. So it will entirely depend upon you, what is it that would suit your temperament and what is it that you would like to do. There are NGOs working with children, there are NGOs working in slums, there are NGOs working in villages. It completely depends. There are a lot of options and you are free to choose. If you do a process, I think you will get to know a lot about all this. Namaste. This is Mahendran, basically from Tamil Nadu. Recently moved from Kentucky, Louisville, Kentucky to Chicago. I would appreciate if you can speak in English so that I can understand. Sorry about it. Yeah, thank you. I have two quick questions. The first question is, in India especially, we have a lot of good people, but we are all subdivided into small groups. For example, even if you take NGO, there are more than 30,000-40,000 NGOs who all wanted to do good things for the people, but still they are all subdivided. In the same way, even if you take some political parties, there are a lot of small parties, but they all have some good intentions. From AAP perspective, like how do we want to really integrate people together? Because especially, doing some social work is little different, where we could focus on a small area, but making a political change, which is a kind of nationwide wave. I really appreciate, the kind of boldness you have in questioning even the people who have that, higher powers. And definitely, like, there are a lot of educated people are getting into politics like you. And there are a lot of IAS folks even from other states who all are getting into politics. That awareness level is increasing, but like how do you want to differentiate AAP, and how do you want to really pull the people together for the common cause, especially in making the massive change across the world, across the nation? Thank you. There are a lot of NGOs and there are a lot of good NGOs, and they are good because they are small. And because of the smallness, they are also efficient. So let's not try to merge all of them, because the moment you merge all of them, I think we will all lose their USP. Just like when Anna Andolon took place, there are a large number of NGOs, organizations, groups from across the country who participated in that Andolon.
We never asked anyone of them to merge with us. They all came together on a particular cause. So I think there is no harm in collaborating with people, enlightening with people, and bringing various groups together on various issues. But the moment we try to merge all of them together, I don't think people are very keen on merging their identities, losing their identities. And that is what my experience has been so far. At the end of the day, every human being has an ego. So all the people in different groups have their own little... I think the practical thing to do is to liaise with each other, to collaborate on these issues. And that has been, whenever we try that, I think that has been very successful. Arvind ji, this is the last question. नमस्कार, मेरा नाम वंदना छिंगन है। मैं एक आम महिला हूँ, भारतीय मूल की, दिल्ली में पैदा हुई और शिकागो में बड़ी हुई। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो आपकी पार्टी, आम आदमी पार्टी, दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रही है, वो दिल्ली की महिला की सुरक्षा के लिए क्या-क्या इंतजाम करेगी? बहुत अच्छा है। पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि आज अगर दिल्ली के अंदर किसी के साथ कुछ भी होता है तो शीला दीक्षित जी से जब मीडिया पूछता है कि क्या कर रहे हैं, तो शीला दीक्षित जी कहती है कि दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली पुलिस तो सेंटर के कंट्रोल में है। आम आदमी पार्टी तो पावर में भी नहीं है, लेकिन हमारी लाइफलाइन के ऊपर बहुत सारे लोग फोन करते हैं और जब हमें फोन करते हैं, हम अभी उनको ये नहीं कहते कि हम पावर नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। हम उनको ये नहीं कहते दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। हम तुरंत एक्शन में आते हैं, जो हमारे कंट्रोल में हम वो करते हैं। जैसे 18 अप्रैल को मुझे 5 साल की लड़की के साथ रेप हुआ था। 18 अप्रैल को दिन में 2:48 पे हमारी हेल्पलाइन के ऊपर फोन आया था और उसके लड़की के चाचा ने हमें बोला कि मेरी भतीजे का 3 दिन पहले रेप हुआ और पुलिस उसमें कोई एक्शन नहीं ले रही है। पुलिस ने मिसिंग चाइल्ड की रिपोर्ट फाइल की और रेप की रिपोर्ट फाइल नहीं कर रही है और गलत हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा दिया। आप लोग मेरी मदद कीजिए। एट दैट टाइम देयर वाज नो मीडिया। इमीडिएटली हमारे गांधीनगर के जितने वॉलंटियर्स थे वो पुलिस स्टेशन पे पहुंचे, पुलिस स्टेशन का गिराव किया और पुलिस को रात भर फोर्स किया रात को उन्होंने पुलिस को कि वो मिसिंग चाइल्ड की रिपोर्ट को FIR को उन्होंने बलात्कार की रिपोर्ट में कन्वर्ट किया। अगले दिन दयानंद हॉस्पिटल में उस लड़की को अस्पताल में एडमिट कराया हुआ था। दयानंद हॉस्पिटल बहुत खराब हॉस्पिटल है। उस लड़की के साथ किया गया था, दयानंद हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं थी उसको ऑपरेशन करने की। तो मनीष सिसोदिया भोपाल का 1000 वॉलंटियर्स के साथ वहाँ पर उन्होंने हॉस्पिटल का गिराव किया एंड अल्टीमेटली द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू शिफ्ट फ्रॉम दयानंद हॉस्पिटल टू वॉलंटियर मेडिकल। इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द वॉलंटियर्स ऑफ आम आदमी पार्टी। 3 दिन के बाद हमारे पास फोन आया, गाजियाबाद की एक परिवार से सुनाया कि उनकी बेटी 18 मार्च को गायब हुई थी। 1 महीना हो गया और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही थी। हमारी टीम ने जाकर गाजियाबाद पुलिस स्टेशन का गिराव किया और 4 घंटे के अंदर वो लड़की मुरादाबाद के अंदर मिल गई। 2 दिन की 23 अप्रैल को मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, एक महिला मेरे पास आई और उन्होंने वो रो रही थी, बेचारी बहुत गरीब महिला थी। उसकी बेटी 6 दिन पहले गायब हुई थी गाजियाबाद से इंदिरापुरम। हमारे वॉलंटियर्स ने इंदिरापुरम थाने का गिराव किया और 24 घंटे के अंदर वो लड़की वेस्ट बंगाल के गाँव के अंदर गई। मैं केवल ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटेंशन होनी चाहिए, ये पावर होनी चाहिए। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई पावर नहीं है, तभी हम लोग ये सब कर रहे हैं क्योंकि हमारी दिल पावर है। अगर कल को सत्ता में आती है सरकार तो हम ये नहीं कहने वाले कि दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम ये नहीं कहने वाले कि दिल्ली पुलिस हमारे साथ नहीं है। हमने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, दिल्ली के बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए एक अलग सिटीजन सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे हम लोग, which will be also targeted to दिल्ली पुलिस। और वो उस फोर्स सिटीजन सिक्योरिटी फोर्स में यंग लड़कियों को हम भर्ती करेंगे, उनको हम ट्रेनिंग देंगे, पुलिस में सिक्योरिटी इश्यूज पे ट्रेनिंग देंगे और हर म्यूनिसिपल वार्ड में उसका एक ऑफिस होगा। हर म्यूनिसिपल वार्ड के अंदर 25 सिक्योरिटी ऑफिसर होंगे, सिक्योरिटी काउंटर जो उस एरिया की महिलाओं को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और इनके सुपरविजन के लिए हम लोग रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को एम्प्लॉय करेंगे। तो हम ये नहीं कहने वाले दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है। And I think the security of the women and security of the people, I think should be the prime concern of any elected government. Thank you very much.
much, Arvindji. If you could please make a closing note, and if you could please make it in English, please. I'm sorry I spoke in Hindi, but that is the language that comes very naturally to me. And therefore, so I'm sorry for those friends who could not understand my Hindi. It's really been a pleasure and an honor to talk to all of you. And I know that some of my batchmates are also sitting in the audience. My batchmates from IAP Kharagpur, a big hello to all of them. And I can only say that we are putting in our best. We are putting all our time, money, stuff laga hua hai. We are putting our everything on this particular thing because for me, and for most of us, it's now or never. Either if we fail this time, then I don't think we'll have another opportunity in my lifetime. And I would, of course, I don't need to urge the fact that all of you have traveled from such far distances and all of your meetings today in Chicago clearly shows that all of you are also part of this Andolan. And I'm very optimistic, and I think in the next 4-5 years, we will not have the same kind of India. I am sure that we will be successful. Together, I think we'll achieve. Thank you very much. I think you are motivated enough by now. You heard two of our leaders, and we are going to welcome our next guest. He is a social scientist, a political analyst. He has been recognized internationally for his extensive work on Indian politics and democracy. But you will always find him calm, composed, and filled with humility. So I won't take much of your time. Let's welcome Mr. Yogendra Yadav. My fellow Indians, the idea of India beckons you. The idea of India calls upon Indians. Inside India, Indians all over the world to strive this idea to make this idea into a reality. The idea of India awaits a renewal. And it is you and me, Indians inside India, Indians anywhere else in the world, who carry this responsibility for giving the idea of India its second wind. I come here to this windy city not merely to talk about one political party. Parties come and go. India currently has probably 1,400. I'm not here to talk only about one political party. I'm here to speak to all of you about winds of change that are blowing in India. I'm here to speak about what those winds of change really mean. I'm here to talk about what you and I can do about that transformation. I would argue, I would speak to you, all of you, about the fact that the idea of India has had one successful edition, and that the idea of India is ready for its second edition now, a second version, India 2.0, you could say, in the language of software. But just when the idea of India is ready for its second renewal, those in charge of the destiny of India have failed this idea. Those in charge
of carrying this idea forward are exhausted. That energy which gave India its power, its presence, seems to be flagging. I shall speak to you about renewing that energy, that wind, that transformation that took place in this country, in India, in the freedom movement. And that is the movement that needs to be carried forward in its second avatar, and what you and I can do about it. I'm conscious of the fact that I speak here in Chicago, where a great sannyasi spoke more than a century and a quarter ago. And when he spoke, he did not speak merely about one religion. He did not speak here to prove superiority of one religion over another. He spoke for humanity. And today, when we speak about the idea of India, we do not speak merely about a country which is bounded by geographical boundaries. We do not simply speak about one country's superiority over someone else, which is not our agenda. We speak about the future of democracy in the world today. I've used this expression, idea of India, several times. So why don't we begin by saying, what is this idea of India that I'm talking about, of which we want to see a second edition, for which all of us can play some role? Let me begin by saying what it is not. The idea of India, as I said, India is not just one more nation state. There are about 190 in the UN. And I'm not saying my country happens to be unique, as I keep saying to my friends, everyone, all the time. Whenever I ask questions about boundaries of this kind, whenever I ask questions about caste or religion, I always say to them, कि भाई अर्जी देके तो पैदा नहीं हुआ था मैं, हो गया था. And there's no point in making too much of it. We happen to be born somewhere. And there's no need to make a virtue out of something that we did not choose. What is interesting about the idea of India is that this country was imagined in a way which was different from the manner in which nation states were imagined in Europe. So India is not merely a nation state, bounded by a physical boundary, circumscribed by a club mentality of we and they, which is how nation states have played out in the last 200 years. India was imagined differently. It is not merely, the idea of India is not merely a reenactment of social, economic history, trajectory, a story or a plot which has been played out by other actors before us. The idea of India is not merely a reenactment of that story, whether that story took place in Europe or in North America. The idea of India is not a reenactment of the idea of Europe. The dream of India is not a reenactment of the American dream. It is different. The idea of India was and continues to be an audacious idea. It's an idea which you could say didn't have a chance in hell. Why? What does the idea of India represent? The idea of India was an audacious idea because this is an idea which imagined that self-rule can be brought to people who do not have money, who did not have literacy. In 1947, India was not only a colony. India had been a colony. It was not only one of the poorest countries in the world, it was also a country which hardly had any literacy. Nowhere in the world democracy had been established in situations where there was so little money, where there was so little prosperity, where there was virtually very little literacy. Everyone said, this is a doomed idea. This was not going to happen. If you go back to the archives of 1952, as I did,
you would find the whole world almost mocking at the Indian elections and saying, they think they can do a democratic election like us, they have no education. This was an audacious idea, the first time in human history that democracy was sought to be established in conditions where democracy had never been tried before. It was an audacious idea that succeeded. Democracy is the only game in town. Other things happen, we complain, and we shall keep complaining. It's our duty, it's our dharma as a citizen to point out what's wrong with our democracy. At the same time, when ruling parties contest, they lose. When they lose, they go out dignified, in a dignified way. Other parties come. Powers change. And in the last instance, as Kumar Bhai reminded us, thousands and thousands of citizens of this country can march to the president's house and say, what is going on in your country? We want to speak to you. So it was an audacious idea. I'm not trying to romanticize what we succeeded in doing. I just want us to remember that India was one of the most improbable democracies in the world. Even today, if you were to plot the history of all democracies in the world by their per capita income, you would find one big outlier, and that is India. No country at this level of per capita income has become a democracy and has survived as democracy. So it was an improbable idea. It succeeded. It needs, but democracy as the only game in town cannot be your final success. This is an idea that needs renewal, because the idea of democracy now has to be taken to ordinary people. Swaraj has to be the spirit of the next step of our democracy. That is something which awaits to be done. The idea of India is not merely about democracy. The idea of India is also an idea of creating an imagined political community across some of the deepest diversity human history has ever known. When India was created in 1947, if you look at the diversities, diversity of religion, India had just been through partition, diversity of caste and community, which was impossible to comprehend for outsiders, diversity of language and ethnicity, which was mind-boggling. No sane political analyst gave this country a chance of surviving more than 10 or 15 years. In the 1960s, books were written about 1960s being the most dangerous decade, and India was about to disintegrate, they said. Yugoslavia disintegrated. Soviet Union, with much smaller diversity, Soviet Union had enormous diversity, but much smaller compared to India, disintegrated. India survived. It was an improbable democracy, and it was an impossible nation. It was an impossible nation in the sense that the European history of nation states, which thought of one language, one religion, one culture, one country. The European idea which came to us was that the cultural, ethnic boundaries and political boundaries must coincide. According to this idea, India should not have survived. But it was an audacious idea. India was an audacious idea of those who said, despite all these differences, we shall create an imagined community. We shall create India in ideas and then create it in reality. It succeeded. But what succeeded was the first edition. We need to take the next step. The next step is now attending to marginalities, those standing on the margins who have never been heard properly. This is the moment when the idea of India would take the next step and go to Iram Sharmila, that woman in Manipur, who's been asking for the last 1 decade, if you don't have Armed Forces Special Powers Act in Haryana or in Punjab, why do you have it in Manipur? The idea of India second edition
needs to go to her and speak to her and find out and do that next step of integration, create something unusual in human history. The idea of India is not just political, it's not just about democracy, it's not just about creating a new kind of nation state. It is also an audacious idea in the third sense of the term. The idea of India is about rethinking development itself. We have had a certain kind of trajectory of development which was given to us. And the 20th century offered you two big models. One was the model which was a very dominant model in the 20th century. Now we don't talk about it. That was the model of the Russian Revolution, which gave one kind of model of economic development, which said, nationalize all property, state captures everything, state does things. The second idea came to us through the dream of capitalism, which said, market decides everything. I'm just simplifying all these things. India is an idea which consciously moved away from both these options, which for the first time, and remember Mahatma Gandhi wrote this more than 100 years ago, which said, this kind of development, whether you do it through communism or you do it through capitalism, this is not available to human beings all over the world. This is something which came through statistics and other things much later, 6 or 7 decades later. But the kind of prosperity and growth that certain parts of the world have today, it simply cannot be given to the rest of humanity, because our earth does not have those kinds of resources. If the whole world were to wish to live the life like Americans do, we cannot live on one earth. We need 7 earths to be able to live on it. This is something Indians pointed out, which is not to say, so this was a different kind of dream, a dream which sought to develop, to combine. It was a simultaneous pursuit of growth, justice and equality. That is to say, growth, which is a necessary condition for being able to distribute, as Jawaharlal Nehru never forgot to remind us. But growth of the kind which would be able to distribute. Of course, we failed miserably in this idea. Unlike the first two ideas, this has been a miserable failure, and we should be honest enough to talk about it. Every year when HDRs come, I find it shameful. In the human development ranking, it's not so much the ranking that matters to me. I don't care whether it's 137th or whatever. What I care for is the fact that our performance in education, health and all the key indicators is absolutely disgraceful for any civilized country. Every year, Pratham, this NGO, brings out a report on the quality of education in rural India. Year after year, the report shows that less than 50% of our students living in rural India can read the ordinary textbook in their mother tongue of a level which is 3 levels below their own, which is to say, less than 50% students of class 5 can read textbook of class 2 in their own mother tongue. This is what makes me ashamed of being an Indian. Every now and then National Family Health Survey comes out with its report on how many anemic children we have in the country. What is the level of undergrowth and malnutrition children in the country? That is shocking, shameful, simply unacceptable for any civilized country. So in the third respect, you could say we failed miserably. Yes, we did. You could say we neither got growth nor did we get distribution. Yes, that's probably true. What we do have in the last 60 years, especially in the last 20 years,
we have created some kind of a platform to be able to begin to address some of these questions. I know there are many Indians who would mock at this platform. I don't. To have some resources to be able to address some of these questions is a must. We have done that. So in the first edition of Idea of India in this respect, we perhaps all that we achieved was merely a platform to be able to address some of these concerns. What we also achieved, what we also retained, I should say, is simply the idea, as I said, that the Indian dream cannot be the American dream. Mahatma Gandhi said, enough for everyone's need, but not for everyone's greed. That has to be our idea, because our model of development clearly said whatever we achieve has to be compatible with what the rest of the world can get. It has to be compatible with what future generations need. It has to be compatible with what the nature requires. As I said, this idea of India, as you can now see, for me, this idea of India has ceased to be something which is bounded within the boundary of the India that we see. It is an idea which has relevance not merely for the boundaries of the state of India in the UN. It is an idea which has relevance for the entire humanity. If we have to survive, if this idea of India survives, there is hope for democracy in the world. If this idea of India survives, there is hope for diversities, which are increasing now, for diversities to be reconciled within political units. And if this idea of India survives, there is hope for development all over the world. This idea of India is up for renewal. However, just when the idea was up for renewal, just when some basic conditions were met, just when the first edition had done very well, this is where those in charge of India, those charged with the destiny of the country, the political leadership, the very political process which had given India so much in the 20th century, that appears to have exhausted itself. And what we witness all over is simply not merely decline of political leadership. Decline of political leadership is something that routinely happens after great movements. The second generation of leaders are normally not so tall people. What we have is an exhaustion of the creative force of politics. I know we don't associate the word creativity with politics because we associate all the muck with politics. For me, politics is not merely the name of all these dirty things that have happened. Politics was very much the soul, very much the driving force of whatever great transformations that took place in India of the 20th century. That force has kind of exhausted itself. Suddenly at that moment, there is loss of vision. 50 years ago, India was a nobody in the world in terms of its political power, in terms of its economic power. Yet, India's voice was heard in the international forum. And today, India has more economic power, more political power. No one cares very much for India because there is that Jawaharlal Nehru at that time spoke for vast majority of humanity. There was a vision, there was a moral force to what he spoke. Today, we have more power but less vision. Today, that idea of India has suddenly lost its carriers. And what we therefore have is, just when democracy,
needed to take the next step towards Swaraj, what is being offered to us? What is being offered to us is family Raj. And I must clarify that when I speak of family Raj, I do not speak only of the Gandhi family of the Congress party. Look around all the parties of India, with my 2 or 3 minor exceptions, every single party practices family Raj. Those who do not practice in Delhi, practice it in the localities at the district level and the state level. When we want Swaraj, we are being offered soft authoritarianism. We need strong leaders. Usually, democracies do not go out for strong leaders because messages of strong leadership comes with lack of accountability. Implicit in this message of strong leader is, let me decide, don't ask too many questions. So, when we wanted to take the next step towards democracy, democratization and Swaraj, we are being offered either dynasties or authoritarianism. Just when we wanted to deepen diversity, after this extraordinary achievement of accommodation of diversities of the unknown kind, when we needed to take the next step to go to Iram Shamila, as I said symbolically, this is when we are being offered 2 kinds of vote bank politics. Divisive politics is being offered to us. One, which is very easily seen to be vote bank politics, because it speaks about one community, does not speak about another communities and so on. It is the dominant vote bank politics of our country. But the other, which is not seen as vote bank politics, is no less of a vote bank politics. The idea that India must be dominated by majority community is the worst vote bank politics of any vote bank politics. Those who want to make India into a community, this idea of Hindi, Hindu, Hindustan, is the idea which would destroy the very idea of India. If there is one big enemy, if there is one real enemy of the idea of India, it is the desire that one community must dominate this country. And I speak not merely as someone who happens to be morally opposed to such things. I also speak as someone who has empirically studied these things. Please study Sri Lanka. You don't need to do deep research. Go to Google, wherever, just do your elementary things. Just see what happened in Sri Lanka. The entire beginning of what turned out to be civil war in Sri Lanka, which has brought that country to brink of disintegration. The country is morally and spiritually and ideologically already disintegrated. And it all started with Sinhala only policy. Sri Lanka mein rehna hai to Sinhala bolna padega. This is where it all started. So like that move, which must have appeared like a move of unity, actually ended up destroying Sri Lanka. There are demands of doing the same in India. I keep joking with my friends that there are some who want a Hindu Pakistan. You know, why are we so envious of Pakistan? There isn't very much to be envious about. You know, so this, at a moment when our country was ready for deepening the idea of diversity, this is when we are being offered solutions which were problems of 50 years ago. We are being offered a divisive politics in 2 varieties. Just when India was ready to redefine the idea of development, we are being given stark choices. Either take growth or take distribution, justice. You won't get both. There are those from the old left who constantly want better distribution, justice, which is nice. But where do you get money to distribute from? On the other hand, you have now a very strong lobby, not a very strong lobby among Indians, but a strong lobby among opinion makers who simply say, more growth, more growth, more growth. Finally something will percolate down. Don't bother about distribution, just have more growth.
for a country which had moved beyond such binaries, such simple divisions. We are being offered older solutions which have already been rejected in the 20th century. So, at a moment when the idea of India was up for renewal, for moving forward, we have a political class that wants to drag us backwards, that wants to offer us divisive solution, simple binary oppositions, that wants to negate the successes that we've had and actually wants to take us 2 steps backward. But there's something about India, something about this idea of India, that it persists. And what we have seen in the last 2 years is that the spirit of India has asserted itself despite its leaders, despite its state, despite its rulers. And this is something so remarkable about the idea of India, that it asserts itself just when it's being drowned. The Anna Hazare movement was not merely movement of Anna Hazare. I had the honor to say this in Annaji's presence from Ramlila Maidan, so I can happily say that again. That it was not a movement about Anna Hazare the person. Every small town and every village almost in India discovered its own Anna. They found that honest one man, which they never cared for in the last 20 years. They installed and started worshipping him. It was about India discovering its own spirit. You know, when you go to a temple, you worship, you're not really worshipping that piece of stone there. You wish to enlighten, you wish to throw focus on, you wish to draw light on that little corner in yourself, which is beautiful, which has those virtues which you do not find anywhere else. This is what Anna Hazare did to all of us. It brought in that hidden virtue within ourselves. This was not a movement for Lokpal. Lokpal happened to be the occasion. Lokpal happened to be that particular act that everyone spoke about. But it was a movement about Lokbal, which is to say, it was an assertion of people's power. So many of the people who participated in Lokpal movement did not really understand the legal niceties. Prashantji understood all those. Most people did not. But they simply said, these rulers are arrogant, they are corrupt, they are cheats. We'll teach them a lesson. This is what they understood. So it was in that sense a movement about Lokbal, people's power. It was a movement that led many people to make the transition from being subjects to being citizens. They were not praja, they became nagarik. And it was not a movement against corruption in the simple sense of bribery and graft. Corruption in India happens to be a summary name, it's a euphemism for the governance deficit that our country suffers from, for the lack of connect between citizen and the government, citizen and those who enjoy power in their name. That gulf that divides the two, that gulf is what people call corruption. So this movement in that sense was a movement which was about bridging this gulf. Corruption happened to be the starting point. Graft of an obscene variety happened to be the trigger. This movement, I would submit to you, was about the idea of India reasserting itself. The spirit of India coming back and demanding that a future for India which was being denied to it by its political leadership. This is what Aam Aadmi Party is all about. Lots of friends have asked, why politics? I understand this question because we associate politics with everything dirty. We associate politics with something that nice people don't do. Kumar Bhai spoke from here and he also said, we don't want to do politics. I understand that expression, the way that expression is used. In a sense, that is our tragedy.
that we have allowed that creative and transformative force of the last 100 years to become a dirty word. Politics was, as Kumar Bhai reminded me, politics was and has been the Yug Dharma of our times. What is Yug Dharma? Yug Dharma is something which in one particular age you have no options about. Politics is one such thing. It may not be the Yug Dharma of all times. It is not the Yug Dharma of all countries. In the US today, you can do lots of nice things in this country without doing politics. Yes, you can. But in India of the last 100 years, and possibly next 50, I can't see any change right now. If you want to bring any substantial change in even one aspect of country's life, you shall encounter politics. And very soon you would have to make up your mind. You would have to say, okay, I wanted to ensure clean drinking water for every Indian. I thought I could do it with an NGO. I thought I could do it with a self-help group. I almost succeeded in one village. But when I wanted to take it to 10 villages, I encountered this Babu, who is being sheltered by this MLA, who is being protected by this chief minister, who in turn is instructing the DM. I have only two options. Either I say, all right, I'll do nice things, but not when they come up against a wall. I'll step back and I'll respect the wall. You can be a nice NGO, you can continue to do good work, and lots of NGOs have done very, very good work. I don't mean to despise what they are saying. Sometimes, some of them would say, no, I shall not stop when I confront a wall. I'll take on that wall. And taking on the wall, and that audacity in taking on that wall, in banging your head against the wall, is what politics is all about. We kept banging at this wall for a very long time, lots of Indians. And we Indians keep cracking jokes about ourselves. The usual jokes. There was one Indian, one Australian, one American, one Chinese. All those standard jokes that we all crack about all the time. Underlying those jokes is a certain pathology. Because underlying every joke is a tragedy. And that tragedy is a self-image of Indians. Where we said, yes, there is this wall and we can do nothing about it. That is what has changed. In the last 2 years, echoing what Kumar Bhai said, we kept going at that wall and we kept realizing perhaps that nothing can be done. But now we have come to a point where suddenly a small hope has taken birth. As they say in Hindi, choti si aasha. Wherever we go, people say to us, it's very hard. आप कर तो रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदार लोग हैं, हिम्मत भी है, मगर ये मगरमच्छ लोग आपको खा जाएंगे, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, सब आपको खा जाएंगे. I understand what they are saying. But the point is, for the first time after a very long period, Indians, ordinary Indians, have started at least looking at this possibility. This is what small hopes are all about. And all things in the world are made of small hopes, which have to be converted. So why are we in politics? We are in politics because politics is the logical culmination of our struggle against corruption. There was no other way. Either we stopped and said, all right, we'll talk about small corruption, but we'll not talk about big corruption. Or we march ahead and say, we shall talk about all corruptions and tackle it and attack it everywhere. This is what has brought us to politics. What have we done so far? The party started in the month of October, was announced earlier. In the month of October, we formally said we would go ahead.
26th of November, we formed the party and formally launched it. We have worked on 4 tracks. In the afternoon, we'll talk in details about that. So, but I'll just mention those 4 tracks that we've been working so far. We created our constitution. We created an organizational structure. We created institutions. There's something unusual there. Arvind Bhai referred to that. I'll probably make a few points about that. Second, we have created an organization. And this is something which is not talked about by the media. Let me just mention that so far, Aam Aadmi Party has held district level conventions in more than 350 districts of India. And we have elected leadership in exactly the kind of convention that we have today. This kind of convention has been held in 350 districts of India. There are about 650 plus. So more than half the districts have held convention. Leadership has been elected, and this is not a leadership which is appointed from Delhi. It has been elected from below. Third, this is what we call Mission Bunyad. Mission Bunyad was actually creating party organization. It's going on. We have reached second phase of Mission Bunyad now. Third track is we have tried to create a policy document for ourselves, which is our Vision Swaraj. Arvind Bhai mentioned that in his speech. Currently, we have about 40 policy groups working, and I've been asked by the party to coordinate all that work. Within a month or so, we hope to release tentative drafts of our foreign policy, defense policy, economic policy, agriculture, all various dimensions of it. We hope to release draft. We hope to get feedback, incorporate it, and in about 2 months or a little more, we hope to come up with a new agenda for India. We will come up with this country. The political party will come up in the country which will say to India, this is what we want India to be like. Fourth, we have kept up with Andolan. When we formed the party, we kept saying to our friends and volunteers, the choice is not between doing Rajniti and doing Andolan. We'll do both. And that's exactly what we have done. Those of us who watched the Delhi agitation on Bijli Pani, after 3 or 4 decades, the city of Delhi has seen an agitation which raised the questions of the last person in Delhi city. After a very long time, concerns of Aam Aadmi, Aam Aurat, and Antim Insan were foregrounded in Delhi's politics. So we've kept up with Andolan. These are the 4 tracks we've worked on. How are we different? Arvind and Kumar Bhai both have already spoken about it. Let me just list it quickly, but I'll be happy to answer the questions about it. Number 1, we are probably the only political party in the country which bans more than one person from a family from occupying any position. Shanti Bhushan ji is our revered person, he's our mentor, but because his son is a member of national executive of our party, Shanti Bhushan ji cannot be executive member even of the Noida Sector 16 where he lives. That's all. 2, we have created a process of candidate selection of a kind which is unknown in Indian politics. We said this obscene business of ticket distribution from above will stop. These party leaders who distribute tickets and says, all right, my chamcha gets ticket, my chela gets ticket, and you must have, when you go to Delhi, you must have seen these obscene hoardings with Manmohan Singh, Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, then the local chamcha and the local chela and everyone. Why are those things done? In the hope of getting ticket. We said, party workers from below will elect their representatives. Yes, the party leadership shall check their credentials. Yes, we'll verify that for honesty and other things. But the business of getting tickets will be done at the level of the locality, not at the level of party leadership. 3, we are one party which has ombudsperson. We have a party with a judiciary within the party, which is to say, if tomorrow you feel Yogendra Yadav is corrupt, talks about
honesty, but he's actually corrupt. You can actually write to the ombudsperson, the Lokpal of Aam Aadmi Party. The Lokpal will not even ask you whether you are a member of Aam Aadmi Party or not. Your complaint will be, you just have to send a complaint and some evidence. Lokpal will look into those evidence and give a verdict which shall be binding for the party. If the Lokpal says Yogendra Yadav should be thrown out of the party, he'll be thrown out of the party. I don't know of any other political party which has created this kind of a mechanism. And finally, it is a party which practices financial transparency. The point that Arvind Bhai said, every single paisa is accounted for, put up on the website. We hope to put up even our expenses on the website. I do not know of any other political party which practices this kind of transparency. Yes, we are different to begin with. Will we succeed? I do not want to give false hopes. I do not want to engage in rhetoric here. Arvind Bhai reminded us that this is one of the rare opportunities. In India, we know this window opens only once in a while. In 10 or 15 years, this window opened once. We have this kind of an opportunity. And we know that when this opportunity arises, we know from 1977, we know from 1989, we also know from similar occasions all over the country at different states and different points of time. Karnataka 1983, Andhra Pradesh at that time, all kinds of situations. That when this kind of an election takes place, ordinary voters pick a broom in their hand and they wipe out everyone. They just sweep them off. I do not know if that would happen in 2014. No one knows when these moments come. We have to be prepared for such moments to arrive. But there is a lot that we can do even before that moment arrives. I'll just mention 3 of those things and then wind up what I'm saying. You can change rules of the game. Thing about politics is that everyone at the top has decided some silent rules of the game. You will not talk about Robert Vadra. I will not speak about Ranjan Bhattacharya. This is the rule of the game. And then these two utterly outsiders Arvind Kejriwal, Prashant Bhushan, these kids walk in and they simply say, but the emperor is naked, and everything collapses. Rules of the game can be transformed by a small force which is determined, which is honest, which is what we have already begun to do. Robert Vadra was someone not... the file about Robert Vadra that we made public was with more than one editors of India. They were sitting on that file. They did not have the courage to talk about it. We made it possible for the media to talk about something. So we've started changing the rules of the game. And finally, a movement can bring new entrants into politics. Every generation has its idealist minority. Those idealists 50 years ago, 75 years ago came to the national movement. 50 years ago they came to politics. Today they don't want to go to politics. Today they want to go to an ecological club, environmental club, they want to save dogs, they want to serve trees, which is good. I don't mock at that. I think it's important. But I would much rather that a substantial chunk of that idealist youth comes to politics, because politics is the youth. And if we bring
And if Aam Aadmi Party succeeds in bringing even 1% of the idealist youth of today's India, young men and young women more than young men, if we succeed in bringing 1% of them to politics, no matter what happens to our party, we would have changed the fate of India. Friends, I began by saying that the idea of India beckons us all to realize it, to give it a second wind. I have argued, I have proposed that this idea of India is something which is of global consequence, which is something which is about the destiny of democracy in the world, which is about ability of people to live with diversities all over the world, which is about the idea of development and reshaping it for the next century. Movements have a long legacy. As I speak here today in the US, I'm conscious of the fact that this is the 100th anniversary of the Gadar movement. Gadar movement of 1913. It finished in 1913. This was a dream imagined by some Indians in the US who thought they would take a ship to India and liberate India. In its limited version, the dream did not work out. But that dream finally produced a Bhagat Singh. Bhagat Singh actually is directly the legacy of Gadar movement. Most of his ideas actually were shaped by Gadar movement. That dream transformed some of the best creative energies in Northwest India for the next almost 100 years. And this was a small chapter, a failed chapter in India's history. It reminds us that great dreams can sometimes be woven sitting far away from where you want them to be enacted. It reminds us that dreams have a long life even after they are shattered and broken. It reminds us that the idea of India is still alive, can be brought into being. And if we see the idea of India in this sense, we can turn to the world, not just to Indians living in India, not just to Indians living in the US, not just to NRIs and PIOs, but everyone on this Vasudhaiva Kutumbakam. We can turn to them with some pride and say, the idea of India welcomes you. Thank you. Thanks a lot, sir. Sir, you make us fall in love with politics. Dirty politics, isn't it? So, I'm sure you would have many questions and you'd like to listen him more. But I'm also getting requests that people are hungry, give us your 10 minutes break. So, friends, we have some refreshers there. Please grab it and come back in 10 minutes. Then we'll have the question answers. And we have many other things to offer. I'm Subramanian from Evanston. So you talked a lot about the idea of India. So this is something which is somewhat close to me. So I believe India has never been one country. It has always been several countries ruled by several kings. There are only 2 or 3 points in our history where a single kingdom has ruled over the entire geographical area that is called India. So, and you also talked about culture and language being boundaries that are European concepts about state, nations and things like that. I believe those are actually natural boundaries, whereas the present geographical boundary of India is an artificially created one, which just happens because of the British rule over this area. The reason I'm asking is this. Is it really possible
for a person, say, living in Kerala or Tamil Nadu to feel the plight of the Kashmiris, or a person living in Gujarat or Rajasthan to feel the plight of the Northeast Indians and the tribal belt. So it's very logical for, I mean, it's different for an educated person who's reading the news, who's aware of, who's taught geography in his school days, that he knows this idea about India. But for a normal person, it's very natural for him to think, why should so much of money be wasted in trying to solve some problem in Kashmir, whereas he's not even getting the basic facilities for his own development. Is this going to be an uphill task? Of course it is going to be. If it wasn't, someone would have done it already. So it's not only going to be uphill task, if you were to say uphill raised to the power 3 or n, it's going to be very, very difficult task. And anyone who assures you success is probably economizing on truth. It is uphill for various reasons. It is uphill, because other parties have simply put in the kind of resources, the kind of money being talked about in the Karnataka Assembly election which took place recently. Every serious contender in any assembly constituency have spent something about 10 crores plus. Assembly constituency where legally you cannot spend more than 25 lakhs or something. So when those kinds of resources are being poured by others, it is of course a serious challenge for you to, not to match them. That no one who wants alternative politics can or should even try to match them. But what pouring of resources does is that it raises the minimum necessary for you to spend to be able to be visible. And that's the point we want to make. Our contest on resources will never be to try and match the resources being poured by Congress and BJP. But there's a certain minimum that you have to spend in order to remain visible in the race. That much we need, everyone needs. So it's uphill in that sense. It is also uphill in the other sense that these political parties, whatever their weaknesses that we talk about, the fact is that they have contacts and not organization necessarily, but they have patronage network right down to every jokey. To be able to break that patronage network is going to be exceedingly difficult. It is difficult because our electoral system is such that unless you come to a minimum threshold, your votes do not begin to convert into seats. So it's difficult for various reasons. How are we going to take it on? Our strategy is that we have seen that over the years, it's a 3 or 4-fold strategy you could say. Number one, we don't want to spread our resources thinly over the entire country. We have chosen a specific place, Delhi Assembly election to begin with, and we want to concentrate our forces there so that our concentrated energy in one limited pocket might be able to touch the threshold of viability. That's our strategy one. Second, our strategy is to turn these elections not into routine elections, because if it's a routine election we would lose. We have to turn into a non-routine extraordinary election. And we know in our country that in wave elections, extraordinary elections, extraordinary results have come. When Janata Party won, it did not win with the help of resources, it won despite the lack of resources. And that's not the only example, there are many examples of that kind. And our strategy is to convert the one strength we have. What is our one strength against all the odds that we have listed? The one strength is that ordinary people who have heard about us, and there are lots of ordinary people who may not have even heard about us, but those who have heard about us
have generally a good feeling. भले लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, देश को ठीक करने के लिए कुछ लोग कुछ काम कर रहे हैं. Sometimes they say बेचारे, ये बेचारे कुछ काम तो अच्छा कर रहे हैं. This is our strength. We are seen to be a moral force. In a sea of muck, we are seen to be different. We have to capitalize on that. It's not easy. It is not easy to convert your moral capital into votes. And we need staying power. As I said, I keep saying to my friends and volunteers, let's be, those who are in it for the long run manage to make a difference. Because mostly, transformative games are not about those who started running first. The real test is those who were standing till the end of the game. And we have to be there. On taxes, sir, I'm not an expert, but I would just I agree with the basic spirit of what you are saying, namely that in order to carry out any large-scale welfare activity, we need a revenue base. And revenue base currently is small. It's small for two reasons. A, because the number of taxpayers is small. Second, the number of direct taxpayers is certainly very small. Indirect taxpayers include every Aam Aadmi of India. But direct taxpayers are very small. And within that small pool, the contributions that they make are actually much less than they should have been making going by the law. This is a real problem. And we have requested some of the best economists of the country to try and address it. Some of the thoughts that come to my mind, which need not be the final answer because I'm not really an expert, are the following. One very simple thing to begin with. I was shocked to discover that the amount of tax exemptions given to the super rich in India are astonishingly large. In this budget, when the finance minister made a long plea about how they don't have resources for this, how they are short of money, how they have nothing left with their treasury, unfortunately not enough for education, not enough money for this, that and the other, in that budget, the finance minister quietly announced tax exemptions to the tune of 5,70,000 crore rupees. And who gets these tax exemptions? Not the ordinary army. This is corporates. Tax exemptions given to corporates amount to 5,70,000 crore rupees, which is more than all the welfare schemes of Government of India put together that we talk about in education, health, etc. It's more than Manrega, Sarv Shiksha Abhiyan, National Rural Health Mission. All these three put together are not even half of these tax exemptions. That's one. Second, compliance rate has to be improved. That is something which seriously needs to be worked at. Third is that the old system of sales tax has to simply go. VAT is already one step forward. And we being a federal country, this gets extremely difficult. But on one thing I must compliment the politicians, that they finally saw the merits of VAT. And now that VAT is being sought to be replaced by a further system which I'm told would be even smarter. So we should have tax base which would be somewhat better. And we need to explore much better ways of expanding the tax base. So I agree with the spirit of what you are saying. And we need to learn from people like you to find out better ways of doing it. On whether the idea of India has succeeded at all, I beg to disagree with you that France and Germany had natural borders, we don't have one. No, France did not have natural borders. In fact, if you look at the history of France, a substantial number of people who live in France today did not speak French. How were they made to, and what has basically, and then Germany, the whole problem was a large number of people who were not German by descent living in Germany. The borders that we see in Europe today are not natural borders. These are borders which have been created through coercion, through ethnic cleansing, even down to this after the Second World War. Please read the history of 1945 to 47.
when the World War has ended, every single European country is busy expelling its minorities. Every one of them. So, basically my plea is that we have one model of dealing with diversities, which is a model which has come from Europe. That model is cultural boundaries and political boundaries must coincide. If they don't coincide, make them coincide. How do you make them coincide? Through homogenization, through forcing minorities to adopt majority culture, by expelling minorities, and by ethnic cleansing if possible. This is the European model. India shows a different model to the rest of the world. That model says, no, we don't need to make cultural and political boundaries coincide. We can live with differences. In fact, we can encourage articulation of differences. Politically acceptable articulation of difference would be the key around which differences would be, around which the nation will be built. This is an extraordinary achievement of humankind. This was not possible. And I would argue, if the world has to live with diversity, if Europe has to live with diversity which they face today, the tiny diversity that they are beginning to face today, they are simply unable to cope. If this part of the world has to live with diversity of a serious kind, not of the kind that it has faced so far, then they have no option but to turn to the idea of India, which is the way to learn to live with diversity. And when you say that Kashmir does not matter to Tamils, speaking of Tamil Nadu, I just want to make 2 points. One, if you look at 1947, the potentials of secession within Indian Tamil Nadu was much higher than potential of succession within the Tamils of Sri Lanka. Tamils of Sri Lanka were well settled, nicely integrated. It was a lovely story. And certain parts of Tamils of India said we have to have Dravistan, we want to have separate country. Today it's the other way around. Why is that so? It is because in Sri Lanka they said no, you have to choose between either being Tamil or Sri Lankan. And in India, some of the founders of India said, no, you can and remain Tamil first. I will never ask you this question of whether you are Tamils or Indians. You can always say I am Tamil and Indian. This is what has made India to be what it is. I was also reminded on Tamil Nadu and Kashmir, allow me to remind you that the film Rosa was originally made in Tamil. There are a bunch of hands, but thanks for selecting me first. My name is Sujoy Lahiri. I came from Washington, D.C. Thank you very much for your wonderful talk. So I actually had a bunch of questions, but I will restrict myself only to one for the time being. Maybe afterwards we might get the opportunity to talk more. So the question I have is that today we heard from you as well as we heard from Arvindji earlier as well, and many a times, that this is a rare opportunity that the Indians or we are getting at this point, and this kind of opportunity comes only once in a few decades probably, where this much of stimulation or motivation gets all together and try to make a change. And Arvindji was told that many a time, which kind of came reflected to me as a stern warning, like do it now or you are going to repent forever. So this is good for people who are trying to awake those people who keep telling that is this ka to kuch nahi hone wala, but they don't do anything afterwards. Or this kind of do or die statement is good for motivating people altogether. But in reality, it is very difficult in a political scenario. You have devoted your entire life to analyze and study Indian politics, and no one better than you knows that how difficult politics is in India and how difficult it is to win a political election in India. It is played in so many different aspects. Our strength is the sheer honesty and sheer transparency that
these parties portray. Delhi election is the bullseye right now, मछली के आँख. So जैसे कुमार जी ने बोले, in morning he told that Ravan ke navi, if we can hit the bullseye in Delhi election, then it's really awesome. I mean, the central of the country, the Aam Aadmi Party is there. But if we lose that, it is possible. So what is our time frame for this fight, and what might happen if there is negative result instead of positive? My name is Rahul. I am from Chicago. I have a question that do you still have that option open for, since you have said 40 odd bodies to think tank act? So can we still put our suggestions there? And another question, can I, because I was recently in India and my people there, they want me to come back and contest, join Aam Aadmi Party and contest election with the party. Is it possible for me? And how is it that possible? Thank you. I have asked this question to a lot of leaders, and this is the very common the understanding in everyone, that see, people like us are involved in some or the other kind of corruption, whether we give bribe, whether we buy some kind of property, whatever. So in that case, they are guilty, they feel guilty about themselves, right? And they restrict themselves to come into this movement because this seems so clean, and they feel like, do I have place in there? How do we tackle that? In terms of time frame and Delhi, in one sense, what Arvind Bhai is saying is right. You know, I mean, in a sense, sometimes the language of now and never can deceive. But I take the basic point of it. The basic point is, launching a political party is like launching a rocket. And in launching a rocket, you either defy gravity or you don't. There are no third options. You don't partly defy. It's a serious analytical point actually, which is that, you know, unlike aeroplane taking off, you know, when the rocket takes off, your basic challenge is to defy gravity. So therefore you fire all your engines, you know, in being able to defy it. Once you defy it, I don't understand much of that rocket theory, but once you defy it, then you can probably regulate your speed. In politics, because the minimum threshold of viability is so high because of the first past the post system in India, unless you get a certain percent of vote, you will not get a single seat. And if you do not defy that, if you do not touch that threshold of viability, in next 2 or 3 elections you would simply cease to exist. That's the rocket simile here. You either go up or you fall down. Therefore, for us the real challenge is to be able to defy this threshold of viability, to break the threshold of viability. Now, we can have different interpretations of what is threshold of viability. Someone would say, unless we win and form government, that is probably putting it very high. For me, the simple thing is, what proportions of votes do you get, which enables you to fight next time and improve it? If you get, for example, 5% votes, next time you will get 2%, in the third election you will be over. If you get 15%, then next time you can make it 20, and third time you can win. So this is the crucial logic of politics. There is some unwritten dividing line. If you end up below that, you can only go down. If you end up above that, you can hope to multiply. For us, the crucial challenge, for me, honestly, is not about winning and forming government, because that is something which is so complicated arithmetic that no one can predict, no one can foresee. The crucial thing is, we must finish above that unseen line, so that next time we can hope to build on. It has to be a long-term game. So there is a long-term dynamics and there is a short-term dynamics.
As I said earlier, and I would say again and again, especially to our volunteers and friends, we are in here for the long haul. It has to be a very long struggle. No nation or country has transformed itself within 1 or 2 years. At the same time, the initial trigger, you have to kickstart something. The metaphor of kickstart is about putting your energy at that point 1. From 0 to 1 is a very hard journey. We are in that journey. So in kickstarting it, you have to put all the energy you have. So we need this short-term dynamic, and then we need the long-term dynamic. At the moment, I would say, discussing long-term dynamics is somewhat academic. Putting all our energy in the short-term dynamic is the only thing in front of our eyes. That's machli ki aankh. That's what it is. In that sense, Delhi election matters to us, because once we can perform, once we can demonstrate in Delhi that we are not one of those also-rans, we are not one of those who were nice people but somehow no one actually looked at them, that we actually are a viable political force. That's all I would say. I would not define it any further. We have to be a viable political force. What is viability and what is the threshold is not for me to define now. That's the challenge. On policy suggestions, yes sir, they are most welcome. What we have done right now is that we have about 40 policy committees. All of them have started working and they've had their meetings. And we should expect an initial draft from most of them in the next few weeks. Some of them have already started submitting the initial draft, but that's only an initial draft. That draft will be put in public domain. We shall seek inputs from everyone. And in the light of that, we'll go back to those committees, ask them to revise it, and then put together the document, make it more coherent. So yes, this is very much the right stage to give your inputs. You can do it in 2 or 3 ways. If you feel strongly about one particular area, you can send the inputs directly to me. My email is yogendra.yadav@gmail.com. It's very simple. If you know my name, you know my email. Send me an input there. I'll make sure that it goes to a committee if they have not made the first draft right now. If the first draft is in, you can still, then the best thing would be to look at that draft and make a more pointed submission. That would be helpful. That's how we would go about it. My only plea would be, please do not send very generalized ideas about how India can be made better. If there is a one-page note saying education, health, agriculture and everything in it, there's very little use we can make of it. So please be specific. No, I mean, this happens, over the years I've learned to respect every input. There is something valuable that comes here, but at this stage, we would not be able to utilize that very much. So if you want to send 2 pages on agriculture, or on how our friend who is not here suggested, how to expand the tax base, that is very useful. That's something we can utilize. But 1-page summary prescription for how to transform India would not help us. On contesting election, yes sir, why not? Welcome. I feel so good when I hear anyone saying I want to contest elections, because that's beginning of a change in national mood. Because earlier decent people would feel ashamed of saying any such thing. So if we can see that change happening, that's lovely. And the best thing is that, unlike other parties, you don't have to convince anyone. You just have to convince workers of the area where you want to be candidate. They decide, not me, not Arvind Bhai. So, and that's actually nice. That party leaders do not decide. Those who happen to be in some committee do not decide. Actually, your workers of that area, if they are convinced that you are the best candidate, why not? The question about the guilt of being corrupt is true. What happens is that, you see, national character, which we often talk about, and all those jokes that I mentioned, Indian, Japanese, and this, half of them are about national character.
you know, and then Indian finally did do number ka cheese and he sort of got it, etc. Now this national character is not something natural, innate or inborn. National character changes with changes in times and overall transformations in the public arena. So it is not that people were born honest 100 years ago and they are not born honest today. What simply happened was that 100 years ago, at the height of the national movement, if you were not quite with the cause, you were made to feel embarrassed about it. So I'm sure there were people who wanted to work with the British, and if you actually find out our own family histories, half of them, I know my Nanaji was freedom fighter, and the entire family cursed him. They were not proud of the fact that he was a freedom fighter. Today, of course, they want to remember him with some pride. But everyone cursed him and said, what kind of a man, cannot look after his wife and, children and so on and so forth. So ordinary people are like this all the time. But big movements tend to uplift the average national mood and strength by making people embarrassed or proud of doing certain things and something else. Today, at least 2 years ago, 3 years ago, if you wanted to be honest, if I wanted to just stand in the queue, even today, the simple act of a powerful, visible person who's standing in the queue makes everyone so awkward. I could not get, I went for my driving license, stood in the queue. I said, test mera. Aapko test dene ki kya zarurat hai? I don't run a driving show on television. I run something else. How do you know about my driving skills? Can I reverse the gadi or not? How do you know this? No, aapka test hum kaise le sakte hain? This is what happens in our country. I insisted that I have to be tested, and he was embarrassed on my behalf that I was being put to test of driving. As simple as this. This is how national character begins to decline. And it is symbolic simple acts which can begin to change. What Kumar Bhai said, let 5 netas be given challan, ordinary traffic challan. Suddenly the quality of driving in India will improve. Once you know that big people can be caught and can be challaned, what it would do is to do simultaneously several things. It would instill a sense of professional self-respect among all traffic police in India. Just the act of 5 ordinary netas being caught, simple challan, to be publicized in the newspapers. 2, it would make people conscious that there are rules which cannot be violated. So there are large number of ways in which this can happen. And in a sense, our movement is very much a movement which is about beginning to make that difference. Yes, there is that residual guilt. Yes, we feel that we are not 100% clean. But I would say to all of them, nor am I. It is in the process that all of us will become maybe a few shades more clean than we were to begin with. That's how I would invite everyone. And that's what this movement is all about. Last 3 questions, people who have not asked questions. Namaste, my name is Sridhar Damali from Chicago. Your lecture is like a graduate student lecture, wonderful, informative. My question to you, when you talk about a local people selected candidate, I'm afraid about caste, gang, and money, muscle, power. Can you explain me for that? Anand Gurga from Chicago. When you were, I guess 2 or 3 questions before, when you were talking about clean image for Aam Aadmi Party, Lok Satta in Andhra Pradesh had a similar image, and everybody knew Dr. JP, who had a similar clean image, but they failed miserably in the 2009 assembly election. They only got 1.8 or 2% vote share. What kind of, and I understand you have a very good relationship with Dr. JP.
what kind of lessons have you taken from that failure? Because, as you said, once you fail to defy the gravity, it's downhill from there. And this is the only chance. This is the first and best chance you get. After this, it's now or never. So, what kind of lessons have you taken from that loss? So, my question is, we have been hearing if not now, then never. But my question is, if not now, what is the plan B? How do we still take it, ahead? How do we still fight the corruption? Can't we fight the corruption by remaining within the system? There are so many existing laws. Then I think we have seen some success in the past, like Mr. Raja went to jail. So can't we take that route as well, along with, we can definitely, the easy route is like we won, we change the system and we change everything. And the second thing is, we still fight by remaining within the system. My name is Shruti from Atlanta. You are a wonderful speaker, no doubt about it. My name is Vikas Malik and I am from Milwaukee. So I have two questions, one regarding security and second regarding media. So in your policy you have a kind of thing which says that we will not have security guards with us if you become minister, if you become prime minister. So but you are wonderful people, you are nice people, right? And if you don't have security guards with you, if you don't have red light is perfectly fine if you don't put red light on your car. But if you don't have security guards with you, there are bad people who are just running after you, and certainly, they can hurt you at any time, and we people as such want your security, So, we want you secure. So, not keeping the red light on the car is perfectly fine, but not keeping the security, I don't agree with that, personally. And the second question is regarding media. Aam Aadmi Party is not still the sweetheart of media. We still don't see the news about Aam Aadmi Party, we don't see the news about Arvind Kejriwal doing upwas. We don't see anything like that on the news channels which are there in Indian TV. What he will do, or what Aam Aadmi will do, Aam Aadmi Party will do to become the sweetheart of media, because media will reach to the Aam Aadmi as such. Thank you. I'll give quick answers in the hope that there may be some time for a couple of more questions. If local people go by, number one, it's not local people who would elect, these are local volunteers of our party who would elect our candidate. And if our volunteers go by caste, religion and muscle power, then we don't deserve to win anyway. So, whichever way, then we don't deserve. Number two, in some ways, and all over the world, not just in India, the social profile of those who become people's representative broadly needs to reflect the social profile of the population they represent. This has to happen in a democracy. Some questions of this kind get raised in India in the name of religion and caste, but I'm sure they get raised in other countries in other names as well. There is a way to respect those concerns without becoming casteist or communal. On Lok Satta, I have observed that experience very closely. I would not dismiss it by calling it a failure. I think it was an extraordinary experiment, which did not break the threshold barrier, the threshold of viability. It fell short of that. But even then, getting 2% vote in Andhra Pradesh was not a small achievement. It was a very important experiment. I would just give you 2 or 3 abstract lessons I have learned. Don't ask me to flesh those out because I know them personally and I respect those friends very much. One is that middle class politics cannot become mass success in India. Because in India, what is called middle class is actually in the middle of nowhere. 95%, those who are 90 percentile and above call themselves middle class in India. And politics for them will remain a tiny politics. If it has to be a serious politics, it has to be politics of Aam Aadmi, Aam Aurat,
Antim insan, the last person has to be addressed. That's one lesson from Lok Sabha experience. Two, that you need to address multiple questions. Questions not merely of policy kind, but questions which resonate with the real concerns of ordinary people on the ground. They must be resonated in your politics. If Bijli Pani is an issue in Delhi, if people of Delhi get hurt by Bijli ka bill, then your politics has to be about Bijli ka bill. It cannot be about transformation of electricity. And third, if we want to transform democracy, we have to be internally democratic. Full stop. If not now, I would again say, let's not draw this black and white image of success being winning elections, making laws, changing the country. That happens, but you see, like the revolutionaries of 20th century realized, revolution is not a one-day affair. Revolution is something which happens every day in small measures. So similarly, the big transformation that we are talking about, there are various ways of kickstarting it, various multiple sites where it's being kickstarted. And I would not say either we win Delhi election or there is nothing. I think victory can take multiple forms. And I would invite, that's why I spoke the kind of things I did. And let us focus on all those sites where we can possibly win in small ways as well. While that big victory should be our target and we concentrate our full energy on that. Fourth, security. Our problem is, and as you rightly guessed, our problem is with the paraphernalia of security. The security of VIP in India, the security paraphernalia, has nothing to do with the physical security of those VIPs. It is a show, it is a pomp, it's a statement, it's a power statement being put out. We want to just completely negate that power statement. Having done that, of course, if tomorrow a politician has to take a major decision concerning a sensitive issue and his or her life is under threat, of course it is the duty of the Republic to offer personal security to that person who has taken crucial decisions. But what you see on the streets of Delhi and Chandigarh is not that. जाग गया हूँ आज मैं, जान गया सब राज मैं, जाग गया हूँ आज मैं, जान गया सब राज मैं, अब अपनी खुद आवाज में। मैं हूँ आम आदमी, 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 मैं हूँ आम आदमी। सड़क किनारे मैं खड़ा हूँ, फुटपाथ पर मैं खड़ा हूँ, बॉर्डर पर जाकर मैं लड़ा हूँ, सीमा पर जाकर मैं लड़ा हूँ। ये महल दो महले मैंने बनाए, ये लंबी सड़कें मैंने बनाई। सड़क किनारे मैं खड़ा हूँ, फुटपाथ पर बॉर्डर पर जाकर सीमा पर जाकर ये महल दो महले, ये लंबी सड़कें बनाई। फिर दर दर क्यों मुहताज मैं, अब जान गया सब राज मैं। फिर दर दर क्यों मुहताज मैं, जान गया सब राज मैं, अब अपनी खुद आवाज में। मैं हूँ आम आदमी, 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 मैं हूँ आम आदमी। तुमको संसद में मैंने बिठाया, तुम्हें अफसर मंत्री मैंने बनाया, तुम्हें बंगला गाड़ी मैंने दिलाई, ये लाल बत्ती मैंने लगाई। तेरे सारे खर्चे मैंने उठाए, जो भी तू खर्चे वो मैंने कमाए। तुमको
संसद में, तुम्हें अफसर मंत्री, तुम्हें बंगला गाड़ी, ये लाल बत्ती, तेरे सारे खर्चे जो भी तू खर्चे, पर बदले में तूने क्या दिया? पग पग पर तूने मुझे रुलाया, तूने हर दिन चूना मुझे लगाया, मैं पहुंचा मिलने तूने बुलाया, मैंने कुछ पूछा तो तूने पिटवाया, पग पग पर तूने हर दिन चूना, मैं पहुंचा मिलने मैंने कुछ पूछा तो मैं कुछ बोला तो मैं कुछ बोला तो ओ सत्ता में बैठे लोगों, तुमने सुनी न मेरी पुकार, इसलिए मैं खड़ा सड़क पर तुझे आज रहा ललकार। तो क्या है आम आदमी की ललकार? ये कपड़े घोटाले तेरी अकड़ के आगे, संसद जाकर मैं बैठूंगा, संसद जाकर मैं बैठूंगा, जन लोकपाल बिल फैलाऊंगा, जन स्वराज का बिल फैलाऊंगा, अब देश का मालिक मैं बनूंगा, अब देश का मालिक मैं बनूंगा,